Hello, good evening, and welcome to this Economy Foundation module. I hope you're all doing well. Today's class is on inflation. I hope you can all see and hear me. थोड़ा सा time हो गया है since we have last spoken about rather than you were 2 days. I hope you missed me. And today we are going to finish this topic of inflation. Actually, in the last 2 days, the DAF of the civil services interview was released, and I have been spending my entire time reading and helping people finalize their DAF. So on Saturday, I took a 10-hour session. On Sunday, I took a 10-hour session. Today in the morning, I took a 4-hour session. Tomorrow also, I will take a 4-hour session, and I will also teach this class. So in the process of all that, as you can probably guess, I have not had the time, and I'm also not had the time to rest at all. So my hand is aching a little bit, right? So since my hand is aching a little bit, I won't be able to write a lot. Although the explanation will be the same, I'll write as much as I can. उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए. The first session was on Saturday. The Saturday session was live in Old Rajendra Nagar. The first 3 hours of that session are on YouTube. After that, I was taking individual DAF sessions. Sunday, yesterday, the session was on Zoom. So I spoke to about 70 people yesterday who are giving the interview. So all of their DAFs, told them what to write, what not to write, etc., etc. Today in the morning from 11 a.m. to 3 p.m. there was a session. Again, just one after the other, people come, they show their DAF, and I have to tell them what they have to write and what not to write. DAF is basically that section where you write your hobbies, your interests, your extracurricular activities, your prizes, medals, and scholarships. You write your service preferences, which service you want first, etc. You write your cadre preferences, which cadre you want as your home cadre, etc., etc. So it is a very important process when you are filling the DAF. So of course, people need help with it. And as I've shown you, so many students of Sarthi IAS have made it to the interview. So that is obviously a very good thing. One slightly, you can say necessary evil from that is that all of them now want to talk to me. And since all of them now want to talk to me, I have to give a lot of time to them. For that reason, it has been a particularly hectic past 2 days. Saturday, Sunday, I have just worked and done nothing else on Saturday. Now, the same thing will continue till the 19th. Till the 19th, I think there will be no solace for me because 19th is the last day when the DAFs will be submitted. Right after the 19th, it will get a little easier. Now, in light of that, we have not been doing active recall sessions, है ना? और आपकी जो बेइज्जती करने का मेरे को मौका मिलता है in active recall, वो मुझे नहीं मिल पा रहा है. So how do I account for that? So to account for that, what I have thought is most likely we will finish economy, everything that we have to read in economy by the end of next week. So it's Monday today. We'll have a class from Monday to Saturday this week and Monday to Saturday next week. By Saturday of next week, that is I think 28th, we will be able to finish everything, barring few current affairs, right? Current affairs is not something that we will be able to cover now for the simple reason that we will cover it once the economic survey and budget are released. So we will have some classes in March also, which are going to be part of this course, where we are going to cover the current affairs of next year after I have time to read, absorb, and understand the economic survey and the budget of that year. All the conceptual things that we have to read, we will have finished by next week, Saturday, that is, I think, by 28th. Okay. Now we have to first understand what about the first active recall things that we have mixed. We have mixed a lot of active recall sessions because I have been involved in the DAF. So आपको मैं ये बता देता हूँ that on 19th, I'm sorry, my hand is aching, so I can't write a lot. 19th is the last day when the DAF will be discussed. After 19th, I will be relatively less occupied with the interview students. So from 20th to 28th. 28th is when I expect we will be able to finish economy. Of course, one class up, one class down. I don't. Whatever happens, we will account for it accordingly. From this time to this time, every class we will have a 1 hour active recall session. This 1 hour active recall session will be of two topics. One will be polity, and one will be economy. So we will get back and we will revise every single topic that we have read
from the first class to the last one, and I will divide it equally. Similarly for polity. So what I have thought is that from 20th to 28th, whatever classes we have, here we will do a 1 hour active recall session every day. Half of this time will go to polity, half will go to economy. The outcome that I'm trying to achieve is that on 28th, every single concept of economy that I have taught you, every single concept of polity that you should know, you should have revised by the 28th of December, right? So you will be ending this year, especially for people who are studying in the foundation program with us, you will be ending this year with complete finishing of economy, complete finishing of polity. You will have completely finished also geography and modern history. One batch will be left with AMAC, the other batch would have completed AMAC also. So all your foundational subjects in the first 6 months with a very good revision will be completed by the end of this year, right? This is the idea that I am carrying. 19th को मैं free हो जाऊंगा, जैसे ही मैं 19th को free हो जाऊंगा, उसके बाद से 20th से हम ये काम करेंगे, and this will be in a proper test format. इसमें किसी के पास कोई excuse नहीं है of not getting the right answer, ठीक है? I hope everything is now clear, है ना? यस संकेत, मैं मीडियम डेसाइल एक्सप्लेन कर दूंगा. अब आर्यन, अब यही तो रह गया है, बैंकिंग, बजट, यही सब तो पढ़ना रह गया. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. और क्या ही है, बाकी सब तो हमने पढ़ लिया. नाउ इन द नेक्स्ट फ्यू डेज I'll tell you the things that we have to study. Today we will finish inflation, then we'll move on to monetary policy. Monetary policy, money and banking are related topics. आपको वो बात समझाई थी. Then, अरे बता रहा हूँ, agriculture पढ़ेगा, don't worry. Then we will come to the next topic. Next topic after that is capital market. Capital market के बाद एक ही topic बचता है fiscal policy and international economics. उसके बाद बचता है sectors of the economy. अब sectors of the economy में 3 sector हैं, industry, services and agriculture. I will tell you the basics of industry, services and agriculture. ठीक है, एक basics मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा. But since if you look at the questions that are coming in the prelims from industry, services and agriculture in the past 6 years, every single question has been inspired from economic survey and budget. Reading it right now is not conducive. जब economic survey and budget आएगा तब पढ़ना चाहिए, and that we'll study then, right? वो हम उसके साथ पढ़ेंगे. So you don't need to worry about that. Jatin, Varun sir will be taking it. I hope everything is clear now. नहीं, आपको बिल्कुल डेली करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. मैं आपको पढ़ाऊंगा सारे करंट अफेयर्स एक बारी में, इकोनॉमिक सर्वे बजट आने के बाद, है ना? कोई इसके अब कोई डाउट रहना नहीं चाहिए. पृथ्वी स्पैम मत करो यार प्लीज. ठीक है, इज इट क्लियर, यस और नो? 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट बाद वी विल स्टार्ट. अभी तक समझ आ गया क्या चल रहा है? इज इट क्लियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू? आई होप एवरीथिंग इज अंडरस्टूड. नाउ विल मूव ऑन फ्रॉम हियर. ठीक है, चलो. नाउ लेट्स गो टू इन्फ्लेशन. हमने अभी तक क्या पढ़ा था? सो फार वी हैव रेड व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन. हमने ये पढ़ा था, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है ना? इसके लिए हमने बहुत सारे इंडेक्सेस पढ़े. वी रेड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, व्हाट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, है ना? ये हम लास्ट टाइम देख रहे थे. इसका इंडेक्सिंग की प्रोसेस क्या होती है? हाउ डू यू मेक एन इंडेक्स, हाउ डू यू देन सी हाउ मच प्राइस हैज चेंज्ड, यू सिलेक्ट अ बेस ईयर एक्सेट्रा. अब हमने लास्ट टाइम जो चीजें पढ़ी थी, ये सारी चीजें, these are actually the things that we are seeing at a conceptual level. Now we have to understand how these things actually happen in the Indian economy, right? So for that, let us just take a look as to how inflation was being measured. So the steps of measuring inflation were: you identify the target group, you construct a basket relevant to that target group, ये हमने देखा था, you construct a basket of commodities, then you measure the prices from relevant market for your target group. जो भी आपका टारगेट ग्रुप है, वो जो कंज्यूम करता है, उसके लिए आप एक
prices measure करते हो, then you index this value and for there you use the base year, then you measure the change with respect to previous year, you did an year on year comparison, and that to month on month year on year comparison. So February 2024 versus February 2023, December 2024 versus December 2023. That is how you present the inflation. ये हमने देखा था last time. Then now along with this, let us now look at what actually which type of CPI and WPI government measures. हमने ये भी देखा था last time that WPI will not have wholesale prices, and we also saw, if you remember, that there is a difference in prices at the wholesale level and a difference in prices at the consumer level. ये बात भी हमने देखी थी, because ऐसा तो नहीं है कि सेम लेवल के प्राइसेस हैं. We related that to factor prices, basic prices, market prices. We related that concept, right? So at wholesale level prices are different, at consumer level prices are different. Now we are going to understand what actual CPI WPI measurement the government of India does. Firstly, there is something called CPI UNME, CPI for urban non-manual employees. This was calculated by the CSO earlier, but it has been discontinued since April 2008. April 2008 से ये CPI discontinue हो गया. This is no longer measured by the government of India. Then why am I telling you? क्योंकि कई बार इसके options होते हैं prelims के questions में, तो हमें we should not have a confusion. CPI UNME has been discontinued. The actual three indicators of CPI are the ones that we had discussed. So there are three CPIs that the government measures using the Labor Bureau. These are CPI for industrial workers, CPI for rural laborers, CPI for agricultural laborers. Now, as soon as I see this, I know what it means, right? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है this consumer price index has been constructed on a food basket, or rather a basket of goods and services most relevant for industrial workers. This has been constructed using a basket of goods and services most relevant for rural laborers. This is constructed most relevant for agricultural laborers. है ना? ये बात हमें समझ आती है. Now these facts you have to remember. What is the base year for CPI industrial workers? It is 2016. अब ये देखो, this is problematic. Ideally this should be changed, but this is how it is continuing. For CPI rural laborers and CPI agricultural laborers, the base year continues to be 1986-87 in the government even today. Ideally हमने क्या देखा था कि base year recent होना चाहिए, but this is not what the government has followed so far. अभी आप देखोगे तो CPI रूरल लेबरर और CPI एग्रीकल्चरल लेबरर का जो बेस ईयर है वो काफी पुराना है, and therefore questions are asked on these. Now who is calculating these three CPI? All these three CPI, if you look at it, they are done for some type of laborers, either laborer working in an industrial setting, laborer working in a rural setting, or laborer working in agricultural setting. So all three are calculated by the Labor Bureau. Labor Bureau के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, right? Labor Bureau के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. Labor Bureau is that department that compiles all statistics and information. सारे stats और information जो compile करती है वो Labor Bureau है, right? We have read this before also. Now, what are some other CPIs that the government measures? Government also measures three other CPIs called CPI urban, CPI rural, and CPI combined, right? CPI rural, CPI urban, CPI combined. ये तीन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेजर करती है. Now, इनके बेस ईयर क्या है? The base year of these was changed post 2015. हमने देखा था कि post 2015 there was a change in the base year of GDP also. Even for these three CPIs, the base year was changed post 2015 to 2012. तो 2012 is the base year for these three CPIs. ये facts हैं जो हमें याद रखने हैं. क्यों? Because these questions do come. We now understand the meaning of the word CPI. We understand what it means when it says CPI urban. But the fact of which is the base year, this is fairly important. ये हमें याद रखना है. And who is compiling these CPIs? The Central Statistical Office. Where, in which ministry is the CSO? ये हम पढ़ चुके हैं. It is the Ministry of Statistics and Program Implementation. तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ये CSO कहां पर lie करता है. So there are three CPIs measured for laborers, which is industrial workers, rural laborer, and agricultural laborer, measured by Labor Bureau. उनके base years देख लिए.
Then there are 3 CPIs measured overall for the entire country as CPI urban, CPI rural. CPI urban and CPI rural are combined to make CPI combined. इन तीनों का बेस ईयर है 2012 और इन तीनों को कैलकुलेट करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस. दिस मच शुड आल्सो बी क्लियर, है ना. अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि CPI रूरल, लेट्स से देयर इज अ CPI रूरल, there is a CPI urban. What is the relative weight of goods and services here? क्या मतलब हुआ इस बात का? Relative weight of goods and services means कि CPI रूरल में कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज डाले गए हैं जिससे बास्केट कंस्ट्रक्ट की गई है, जिससे फिर मेजर किया जाता है प्राइस कंपैरिजन. CPI अर्बन में क्या क्या डाला गया है, what all goods and services have been put in CPI अर्बन. इन दोनों को कंबाइन करके ऑब्वियसली एक CPI कंबाइंड बनाया जाएगा. We also know that CPI rural and CPI urban will have different basket of goods and services. Why will they have different basket of goods and services? It is very simple. This basket of goods and services will be different because the rural consumer and the urban consumer do not have similar consumption patterns and neither are the prices same. Now let us look at कि क्या क्या चीजें डाली जाती हैं in CPI rural and CPI urban. एक एक करके कंसिडर करते हैं. This is the basket of goods that is and services that is put in CPI rural. पहले CPI rural देखते हैं. अब you will obviously CPI rural have a lot of basket and a lot of goods and services. ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक आधी चीजें होंगी. CPI rural in itself has 700 goods and services. Now it is very difficult for me to write 700 goods and services here. 700 ना मैं याद कर सकता हूँ, ना मैं लिख सकता हूँ. तो CPI rural में there in CPI rural there are about 700 goods and services. तो how are they studied कि ये 700 क्या हैं? They are further classified into various items. Some will be, for example, food items. Some will be fuel items. Some will be related to housing. Some will be related to transport. Right? Obviously, मैं 700 के 700 तो याद नहीं कर सकता. So I will classify these 700 items that I have put in CPI rural into food, fuel, housing, transport, etc. etc. अब जो मैं चीज देखना चाहता हूं, लेट्स से CPI रूरल में मैंने डाला wheat, rice, pulses. The more goods I put of food कैटेगरी के मैं जितने ज्यादा गुड्स डालता जाऊंगा उतना ज्यादा चेंज इन प्राइसेस ऑफ फूड विल इंपैक्ट CPI रूरल. ये बात समझ आ रही है? मैंने एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनाई, उससे मैं प्राइस चेंज मेजर कर रहा हूं. जितने ज्यादा मैं उस बास्केट में फूड आइटम्स डालूंगा उतना ज्यादा फूड का प्राइस चेंज विल इंपैक्ट CPI रूरल का प्राइस चेंज. इज दिस क्लियर? लेट्स से CPI रूरल में मैं हाउसिंग में कोई भी गुड्स और सर्विस नहीं डालता. I don't put any good or service that is classified as housing in CPI rural. Then even if housing prices become 10,000 times more than last year, they will have no impact on CPI rural. है ना? अब जो भी आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं, whatever discussion we are going to do in the next 1 hour, it is actually hinging around one single question. देखो, हमने क्वेश्चन के थ्रू ही हमने देखा था कि RBI, अभी ये चीज हम कल पढ़ेंगे, RBI has the responsibility of controlling inflation, है ना? This I know. To control inflation, what does RBI need to know first? अगर मैं आपको कहूं इन्फ्लेशन कंट्रोल करो, सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए? हाउ मच इज इन्फ्लेशन? तभी आप कंट्रोल कर पाओगे. हाउ मच इज इन्फ्लेशन एंड व्हाट इज माय टारगेट, तभी आप देखोगे. So you should know the target and you need to know how much is inflation. इसके बिना तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते. Now how much is inflation will be different when measured through CPI rural, when measured through CPI urban, when measured through WPI, when measured let's say through CPI agricultural laborers. हर में in each of these will give a different rate of inflation because all of these have
different basket of goods and services. ये बात भी क्लियर होगी. So if I am using CPI rural, then my measures that I will take to control inflation will be different. If I am using CPI urban, then the measures I use will be different, because the value will be different and my outlook will be different. So in the next 1 hour we will try to answer the question, which of these index should I use? कौन सा index मैं use करूं? And which index the RBI actually uses, this we will see tomorrow. अभी आई एम ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चन कि यार ये इतने सारे इंडेक्स हैं, हर डिफरेंट है, मैं कौन सा इंडेक्स यूज करूं ताकि मैं बेस्ट इन्फ्लेशन को ट्रैक करके उसको कंट्रोल कर सकूं. दिस इज द क्वेश्चन आई एम ट्राइंग टू आंसर. ठीक है. नाउ टू आंसर विच इंडेक्स, आई नीड टू नो द कॉम्पोजिशन ऑफ दीज इंडेक्सेस, कि किस इंडेक्स में क्या क्या है ना. यहां तक बात समझ आ रही है. नाउ obviously I will not use any of CPI industrial workers, agricultural laborers or rural laborers for controlling inflation, because these are for a very specific set of people. बहुत specific set of people के लिए ये 3 बनाए गए हैं, तो ये तो कंसिडर नहीं किए जाएंगे. इनको यूज करके तो मैं इंडिया की इन्फ्लेशन मैप नहीं कर सकता. I will consider various indices in this question. Which index to use? I will consider the first index as, maybe I could use CPI rural, maybe I can use CPI urban, maybe I can use CPI combined, maybe I can use WPI, or is there something else that can be constructed which is a better idea to measure inflation? And then once I measure, then I will be able to target. तो RBI कौन सा इंडेक्स यूज करे कि इन्फ्लेशन का एक एक्यूरेट एस्टिमेशन मिले, फिर उसको RBI टारगेट कर सकती है. ये बात समझ आ रही है? What we are trying to do here. Now we are trying to answer this question. Obviously it will not be any of these. Obviously एक बड़ा इंडेक्स ही हम यूज करेंगे, है ना. Now we have to understand. Is clear what we are trying to do? ठीक है. Now ठीक है. Let's look at now basket of goods that are present in CPI rural. CPI rural में क्या क्या present है पहले वो देखते हैं. CPI rural में 54% of the items are food and beverages. 3.26% of the items are pan, tobacco and intoxicants. Intoxicants meaning alcohol. 7.3% are clothing and footwear. Housing is 0. CPI rural में housing consider नहीं की जाती. अब लॉजिकल है, अगर आप रूरल एरियाज में देखो, मोस्ट पीपल आर स्टेइंग ऑन देयर ओन फार्मलैंड, उनके पास फार्मलैंड है, वो उसी में ही रह रहे हैं. इवन पीपल हु आर लेबरर्स ऑन समबडी एल्सेस फार्म आर स्टेइंग ऑन देयर फार्मलैंड एंड दे आर हार्डली पेइंग एनी रेंट. तो अब अगर रेंट प्राइसेस इन इंडिया आर इंक्रीजिंग मेनी फोल्ड, it might have a huge impact on urban inflation. It is not going to have much of an impact in rural areas. Rural areas में तो rent पे करते ही नहीं लोग. So when I am constructing this basket for rural areas, I will make housing as 0. Fuel and light is 7.94% and miscellaneous items are 27%. Miscellaneous में भी आगे बहुत categories होती हैं, right? अब let me now compare this to a CPI urban basket. In a CPI urban basket, the amount of food and beverages has been put lower. So lower weightage has been given to food and beverages. Pan, tobacco and intoxicants has been given an even lower weightage. Clothing and footwear has also been given a lower weightage. All of this is getting a lower weightage. Why? Because housing has a huge weightage. Housing prices in urban areas are very, very, very high. If you are calculating your budget and you are living in an urban city, you will calculate your housing budget significantly. In a rural area, you will not, because you are not paying rent. Even the land that you own is agricultural land where you can build your own house. It is allowed to build your own house on agricultural land, and agricultural land is very cheap relative to commercial or urban residential land, right? So
housing here in CPI urban has a fairly high weightage. Fuel and light has about 5% and miscellaneous items about 29%. So this is the urban basket. It is the sort of commodities that are present. This is the rural basket. These are the sort of commodities that are present. Now the combined item, the one where we combine these two, this comes out to something like this. It obviously has the food weightage will be between these two. Pan tobacco will also be between these two. Clothing, footwear will be between these two. Housing will be between these two. Fuel and light will obviously be between these two, and miscellaneous items also between these two. So the combined one is I combine this basket and this basket and then come to a basket here. All these figures given here are in percentage, and all these figures given here are things where you don't have to remember the exact percentage, but you need to have an idea, because इस exact चीज पे कम से कम 3 बार क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में कि हाउसिंग है सीपीआई रूरल में या नहीं. आपने याद है मैंने क्वेश्चंस भी देखे थे, सीपीआई अर्बन काउंट्स दिस और डजंट काउंट दिस, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. So we need to get an idea, and if you look at it, it is fairly logical, right? Now, इन तीनों के बेस ईयर हमने क्या देखे थे? The base year is for all three of them is 2012. The base year for all three of them is 2012. Now 2012 is also 12 years ago from today. So already there has been a process started to change the base year. This is from this year's economic survey of 2024 economic survey. Look at what it says. The exercise to change the base year of CPI from 2012 to 2024 has been initiated. An advisory committee on national account statistics has been set up to decide base year for GDP. So base year of GDP will also be changed. Base year of CPI will also be changed. Currently for GDP, what is our base year? याद करके बताओ. GDP के लिए अभी हमारा base year क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं. और CPI के लिए जो हमारा base year है वो भी similar ही year है 2012. So obviously we want to change the base year to become more recent. For CPI we have already initiated the process to make 2024 the base year, and for GDP, like you are rightly pointing out in the chat, the base year is 2011-12, and even this base year will be changed further. समझ आ गई बात? This is what we are basically trying to do when we look at base years as far as the CPI is concerned. तो अभी मैंने 3 indices देखे. I have seen 3 indices. One is CPI rural, CPI urban, CPI combined. Now I have one question for you. If, as you can see this was also in the news. So base year is something that we might get a question on in the 2025 prelims. बहुत ज़्यादा news में रहा है. But now we know how base years are identified, etc., etc. Now, I have a question for you. Tell me one thing. Tomorrow, if government changes tax rates, if government tomorrow makes tax rates double, GST rates tomorrow, rather I should make it clear. Government makes GST rates tomorrow double. Will it have an impact on CPI? Will it have an impact on CPI if double GST rates are done? Good. Because CPI is measuring prices at the consumer level. Here I am seeing the prices at the consumer level. So of course at the consumer level, even the effect of taxes and subsidies will be counted. Right? अरे इसमें aggregate supply या aggregate demand की कोई बात ही नहीं है. This is not what we are seeing. मैं आपसे inflation नहीं पूछ रहा हूं कि taxes से क्या होगा. मैं ये नहीं पूछ रहा हूं आपसे. Simple is I am measuring it is you don't have to count. आप यहाँ पर aggregate supply, aggregate demand का ग्राफ मत बनाओ. Don't get confused. I am not asking you what will happen to inflation. Will it impact CPI or not? CPI पे impact आएगा या नहीं? CPI बढ़ेगा या घटेगा? I am not asking you. Will it अगर बढ़ेगा या घटेगा मैं आपसे पूछता, then you would have to make that graph. But will it impact the CPI? Impact का क्या मतलब है? It will impact the CPI because CPI measures prices at the consumer level. And if CPI measures prices at the consumer level, the prices at the consumer level will change. Obviously, the prices at the consumer level are going to change
because GST rates have been doubled. There is going to be an impact on CPI. Whether it is going to be higher, whether it is going to be lower, वो आप छोड़ दो अभी के लिए. अभी बस इतना दिख रहा है कि impact जरूर होगा, right? Now if I am using CPI for tracking inflation, if I am using CPI to track inflation, don't you think this is an artificial thing? ये एक आर्टिफिशियल चीज है, इसका एक्चुअल सप्लाई डिमांड से कोई लेना देना नहीं है. जीएसटी रेट्स माइट फर्दर इन्फ्लुएंस सप्लाई बाद में, राइट? बट एक्चुअल इट हैज नो इन्फ्लुएंस विद सप्लाई और डिमांड. दिस इज एन आर्टिफिशियल प्राइस दैट द गवर्नमेंट हैज पुट, बट आई कैन यूज इट टू टैक्स इन्फ्लेशन. आई कैन यूज इट टू, यू नो, दिस टैक्स विल इंपैक्ट सीपीआई एंड दिस सीपीआई इज यूज्ड टू ट्रैक इन्फ्लेशन. गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट्स बढ़ाए, सीधा इन्फ्लेशन बढ़ गई, राइट? So this is one of the conundrums that we will solve in the next 2 classes. हम ये conundrum solve करेंगे कि इसका हम क्या करें, right? Now let's see कुछ और, let's look at some other things. Now one term that we hear very commonly in the news is headline inflation. हमने देखा था headline, हमने देखा था something called headline growth. Headline growth is, what is headline growth? The growth that is generally mentioned in the newspaper headlines. What is our headline measure of growth? बताओ हमारा headline measure of growth क्या है? What is our headline measure of growth? क्या पढ़ते हैं हम headline measure of growth में? You should say GDP at current market prices. Then it will be correct. GDP at current market prices is our headline growth indicator. Similarly, if we look at our headline inflation indicator, it is based on CPI combined. If in the headlines you will say, that there is 5% inflation in India. If there is 5% inflation in India, we will say it is based on CPI CPI combined. CPI combined. CPI combined is a measure of both rural and urban CPI. Headline inflation is measured on the basis of CPI combined. And this is the one that is reflecting the overall inflation. Now, why did I take this? Even though it includes taxes, etc., this we will understand when we read monetary policy. आपको बस वो effect मुझे दिखाना था. जब हम monetary policy देखेंगे, then I'll understand why did I include this. But overall inflation is reflected through CPI combined, and this is my measure of headline inflation. क्यों मैंने ये लिया वो हम कल समझेंगे. Now let us understand कि इसमें क्या क्या चीजें हैं. What are the various things in CPI combined? ये हम देख चुके हैं. These are the things that are there. अब इसमें there are few things which are very volatile. कुछ चीजें हैं जिनके प्राइसेस आर वेरी वॉलेटाइल. वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है? दे चेंज वेरी क्विकली. थिंग्स दैट विल चेंज वेरी क्विकली, राइट? ये वॉलेटाइल चीजें हैं. जैसे कि लेट अस लुक एट द प्राइस फॉर फ्यूल. आपको भी पता होगा ये और मुझे भी पता है दैट प्राइस ऑफ फ्यूल इज चेंजिंग ऑलमोस्ट एवरी डे. आज 90 रुपीज लीटर, कल 92, कल 93, कल 94. ऐसा बहुत ज्यादा हो जाता है. क्यों होता है? बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स. एंड इंपोर्ट्स में अगर आप देखोगे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट समथिंग कॉल्ड द ओपेक. दे विल चेंज द सप्लाई, कि कितना सप्लाई किया जा रहा है ऑयल, ताकि वो फ्यूल प्राइसेस चेंज हो उससे, सो दैट दे कैन स्टे प्रॉफिटेबल, राइट? सो फ्यूल के प्राइसेस आर वेरी वॉलेटाइल. Now, if I am measuring the fuel prices in my CPI combined, then CPI combined as an index will also become very volatile. कभी बहुत ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे. अगर एक इंडेक्स इस टाइप का है,
कैन आई यूज दिस टू ट्रैक माई इन्फ्लेशन एंड देन कंट्रोल इट? ये इंडेक्स दिखा रहा है कि आज इन्फ्लेशन 4% है, कल 6% है, परसों 3% है, फिर 2% है, फिर 5% है, फिर 6% है, फिर 7% है, फिर 9% है। तो इस टाइप का इंडेक्स अगर मुझे मिल गया, नहीं, इट इज एक्यूरेट। एक्यूरेट तो ये है ही, फ्यूल प्राइस चेंज हो रहा है तो एक्यूरेट तो है ही, इसमें एक्यूरेसी में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां क्या है? देयर इज नो प्रॉब्लम इन एक्यूरेसी, इट इज मेजरिंग इट एक्यूरेटली। द प्रॉब्लम हियर इज दिस कैन नॉट बी यूज्ड बाय मी फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। मैं कभी कोई डिसीजन ले ही नहीं पाऊंगा ऑन इन्फ्लेशन कंट्रोल इफ दिस इज द इंडेक्स आई एम यूजिंग। कैसे डिसीजन लूंगा मैं? बिकॉज कभी ऊपर है कभी नीचे, डिपेंडिंग ऑन फ्यूल प्राइसेस, राइट? तो the decisions will not be taken because I will not get a stable figure. I will be able to take an economic decision. मैं economic decision तब ले पाऊंगा जब आप मुझे कहोगे from last 2 months inflation is at 4%. Now this is a stable thing. Now I can take a stable decision. है ना? अगर ये ऐसे ऊपर नीचे होता जाएगा तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है। Fuel prices are volatile. What is the other thing that is very volatile in terms of price? इस इंडेक्स में देखो और बताओ कि सबसे ज्यादा और वॉलेटाइल चीज कौन सी है इसमें? ऑब्वियसली फूड एंड बेवरेजेस इज ऑल्सो वेरी वॉलेटाइल। ये भी तो एक बहुत वॉलेटाइल आइटम है, बहुत ऊपर नीचे होता है इसमें भी। फूड इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल। हाउसिंग कौन बोल रहा है यार? आपका रेंट रोज चेंज होता है क्या? डज योर रेंट चेंज एवरी डे? बट आप when you go to let's say the vegetable market, when you go to the vegetable market, can you say that potatoes will always be available at ₹100 per kg? अगर आज ₹100 पर केजी हैं, हो सकता है कल ₹120 पर केजी मिल रहे हो सकता है परसों ₹150 पर केजी मिल रहे हो, फिर ₹80 पर केजी मिल रहे हो। बिकॉज द सप्लाई जो पीछे से आ रहा है पोटैटो, द सप्लाई ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे ही डिपेंडेंट है। डिमांड इज ऑल्सो चेंजिंग वेरी क्विकली। आज लोगों का मन है पोटैटो खाने का, कल नहीं है। एंड सप्लाई ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स ऑफ वेदर। अच्छी बारिश आई नहीं आई, सप्लाई लॉजिस्टिक्स हुए नहीं हुए, ट्रांसपोर्ट आया नहीं आया, आज ट्रक नहीं पहुंच पाया तो प्राइस बढ़ गया, राइट? सो दीज थिंग्स विल कीप चेंजिंग वेरी क्विकली एंड दिस विल ऑल्सो कीप चेंजिंग वेरी क्विकली। तो ये जो फ्यूल एंड लाइट है और ये फूड एंड बेवरेजेस है, ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल आइटम्स हैं, राइट? नाउ इफ दिस टू आर वेरी वॉलेटाइल आइटम्स, देयर आर अदर आइटम्स ऑल्सो। ये तो 50% ही है टोटल, बाकी चीजें भी तो हैं इसमें। अगर मैं पूरे इंडेक्स को यूज करूंगा, अगर मैं पूरे इंडेक्स को एज इट इज यूज करूंगा, तो मेरे ये वॉलेटाइल आइटम्स भी काउंट हो जाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ दीज वॉलेटाइल आइटम्स माय एंटायर इंडेक्स इज गोइंग टू लुक लाइक व्हाट? इट इज गोइंग टू लुक लाइक समवॉट लाइक दिस। अब इस टाइम पे मेरे लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो नेक्स्ट चीज आरबीआई ने क्या करी? आरबीआई केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर इन्फ्लेशन। कि लेट्स लुक एट जो कोर नॉन वॉलेटाइल चीजें हैं उसमें कितनी इन्फ्लेशन हो रही है, उस हिसाब से हम टारगेटिंग करते हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस इज व्हाट द आरबीआई यूजेस। अभी मैं आपको सिर्फ लॉजिक बता रहा हूं, आरबीआई एक्चुअली क्या यूज करता है वो हम कल देखेंगे। वी आर लुकिंग एट कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन मींस ये जो वॉलेटाइल आइटम्स हैं इनको हटा देते हैं। सबसे दो वॉलेटाइल आइटम्स कौन से हैं? एक फूड, एक फ्यूल। तो मैं सीपीआई ही काउंट करता हूं, बट आई विल रिमूव फूड एंड फ्यूल फ्रॉम इट। CPI minus food and fuel. So I will consider all of the CPI, but the food items and fuel items, यानी कि ये वाला फूड एंड बेवरेजेस एंड फ्यूल एंड लाइट, दिस आई विल रिमूव। बाकी सीपीआई को देखते हैं। बाकी सीपीआई एक रिलेटिव कोर स्टेबल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन बता सकता है, उससे फिर मैं इन्फ्लेशन ट्रैकिंग करूंगा। दिस कॉन्सेप्ट वाज कॉल्ड कोर इन्फ्लेशन। सो वी रिमूव द वॉलेटाइल आइटम्स। कौन से थे वो? फूड एंड फ्यूल, फ्यूल एंड एनर्जी, व्हाटएवर यू वांट टू राइट। And it was focusing on the less volatile items, which are the stable components, so that I can exclude the volatility of prices and get a stable number.
right? Volatility of prices can be stopped and I can get a stable number of inflation for further inflation targeting. ये बात समझ आए? This is core inflation. Now, इसके बाद एक और चीज हुई. There was a new concept of refined core inflation. This was proposed by the Economic Survey of 2021 and 2022. क्यों? देखते हैं. Let's look at this group. Food will be here in this group. Food is here and fuel should be here. And these are the two most volatile things. So once I remove the effect of this group and remove the effect of this group, I am only counting this group and this group. And now I am trying to get a core inflation which is a stable number. है ना? जब मेरे पास stable number आ जाएगा, then my tracking, my analysis will become better. But what was seen was this item of fuel and light. अगर मैं सारा देखूं जो fuel है, fuel is not only the petrol that we use in our cars. Fuel सिर्फ हमारा cars में नहीं है. That is not the only thing that comes under fuel. If you look at the fuel, for example, the cooking gas that we use, the gas that we use to heat our homes, biogas that is being used, kerosene that is being used, cooking oil that is being used, all of that is coming under fuel and light. But the fuel that is actually being used for vehicles, इसको काउंट किया जा रहा था नॉट इन फ्यूल एंड लाइट. यहां नहीं काउंट किया जा रहा था, इसको काउंट किया जा रहा था यहां मिसलेनियस में, राइट? फ्यूल एंड लाइट इंक्लूडेड थिंग्स लाइक केरोसिन, कुकिंग, एलपीजी एक्सेट्रा. एलपीजी के हम पे करते हैं प्राइसेस, देयर आर सिलेंडर्स एक्सेट्रा. बट जो फ्यूल फॉर व्हीकल्स था, पेट्रोल फॉर व्हीकल्स, डीजल फॉर व्हीकल्स, दैट वाज एक्चुअली बीइंग काउंटेड इन मिसलेनियस. So even once food and fuel and light were removed, this figure did not come out to be stable. हमने ये हटाने के बाद भी हमें दिखा कि जो इन्फ्लेशन फिगर्स आ रहे थे वो स्टेबल नहीं आ रहे थे. स्टेबल क्यों नहीं आ रहे थे? Because fuel for vehicles was also counted in this miscellaneous category. So then the Economic Survey of 2021 and 2022 came up with a new idea. This new idea was called refined core inflation. We need to further refine our definition of core inflation to reach that stable core number. तो इन्होंने क्या बोला? That items such as petrol for vehicles, diesel for vehicles, lubricants and other fuel for vehicles, this was actually being included in the miscellaneous category. This was actually included in the miscellaneous group. तो इन्होंने कहा it was not part of the fuel and light group, it was part of the miscellaneous group. तो ideally now that I want a stable number, I should include this also. इसको भी मुझे हटाना पड़ेगा, तब जाके मैं stable number पे पहुंचूंगा. So the idea of refined core inflation came. They said this is why core inflation is not stable. You need to come to refined core inflation. And now let us look at this graph. The yellow line is the line of, yellow line here is retail core inflation. Meaning core inflation meaning CPI माइनस फूड माइनस फ्यूल एंड लाइट. ये देखो, ये इट इज लाइक दिस. लेट अस कंसिडर ओनली दिस मच पार्ट. यहां से यहां तक का पार्ट कंसिडर करते हैं. लेट्स लुक एट फ्रॉम हियर टू हियर. इतना पार्ट देखते हैं. दिस इज फ्रॉम December 2020 और रादर February 2020 टू दिस पार्ट. February 2020 टू December 2021. इस पार्ट को कंसिडर करते हैं. From here, if you see the actual data, the retail core inflation, the core inflation that is supposed to be stable has moved like this. This is movement of a core inflation which we think is supposed to be a stable economic measure. And if we look at refined core inflation, it has moved like this. ये obviously ऊपर नीचे तो होगा ही, that is how these prices are measured. But if you look at refined core inflation, it is much more stable relative to retail core inflation. अगर आप यहाँ पे core inflation देखना चाहो तो वो तो रेड लाइन से represented है. It is very volatile. Refined core is still stable.
अब ये डेटा अगर मेरे पास है, if I have this refined core data, then it is easier for me to think that okay, now I will use this for inflation control because I have some sort of a stable data, right? एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि कहां पे चल रहा है. जैसे अब मुझे दिख गया कि यार ठीक है, इट इज इन द रेंज ऑफ 5.5 and 6, so now I know what to do. If it is like this, how do I control? तो ये फिर देखा गया by the economic survey of 2020-2021 that we need to focus on refined core inflation as our key statistic, because the petrol for vehicles, diesel for vehicles, lubricants for vehicles were actually being counted in the miscellaneous category and not in the fuel and light category. So that would be removed to get a more stable picture of inflation in the country. Is this much clear? ये बात समझ आई? इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है. There has been a question on this. अब आप Now I want you to, अब आपका दिमाग लगाने का टाइम है. हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे of 2 minutes and आप लोग you will use your brain now. मैंने आपको अभी दो चीजें बताई कि CPI से मैंने हटाया पहले फूड, फिर मैंने हटाया फ्यूल एंड आई वेंट टू कोर इन्फ्लेशन. कोर से भी मैंने हटा दिया पेट्रोल फॉर व्हीकल्स एंड आई ऑन डीजल फॉर व्हीकल्स, लुब्रिकेंट्स फॉर व्हीकल्स. ठीक है, ये भी मैंने हटा दिया. देन आई हैव रीच टू द स्टेज ऑफ रिफाइंड कोर. नाउ टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस. इसमें दिक्कत क्या है? मिसलेनियस वॉज नॉट रिमूव्ड. लिपिका, आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं सोचने के लिए. मिसलेनियस में से दीज कैटेगरीज वर रिमूव्ड. ओनली दिस पेट्रोल डीजल वॉज रिमूव्ड. मिसलेनियस पूरा वॉज नॉट रिमूव्ड. And Joyita, LPG and other things were being counted. Everywhere we use fuel other than vehicles was being counted in fuel and light. Fuel and light से आप ये समझ सकते हो कि लाइटिंग जिसके लिए जो फ्यूल यूज होता है, इवन कोल इज काउंटेड वहां पे. सोचो इस बारे में कि क्या इशू है.
All right. So most of you have given the right answer. Just a second. Yeah, most of you have given the right answer. If you think about it, I am counting it from refined core inflation. Right? मैं count तो कर रहा हूँ refined core inflation से. This is giving me a stable picture also. But what is the problem here? The problem is कि यहाँ पर जो food और fuel है, these are accounting for at least 50% of my budget. ज्यादा से ज्यादा लोग इसी पे स्पेंड करते हैं. Now the problem is ये तो आपने काउंट ही नहीं किया. Now if you have not counted this, right, then refined core is not a good measure. Stability से क्या हुआ? You are able to find stability, but what people are actually spending on is not counted. This became the problem with refined core inflation, right? Now let's go further. अब इसको काउंट करने के लिए एक और चीज लाई गई. To count for this, then we came with another thing called consumer food price inflation. This is a sub-component of CPI combined, and it tracks food items within overall basket of goods and services. तो अब उन्होंने क्या कहा कि यार फूड प्राइस अलग से भी तो ट्रैक करना चाहिए, सबसे ज्यादा लोग फूड पे स्पेंड करते हैं. Then they came up with something called consumer food price inflation. इसमें हमने क्या किया कि यहां पर जो फूड एंड बेवरेजेस वाला ग्रुप है, दिस इज द सीपीआई. सीपीआई में पहला ग्रुप है फूड एंड बेवरेजेस. ये फूड एंड बेवरेजेस वाले ग्रुप से देयर वर एक्चुअली 12 सब ग्रुप्स इन दिस. इसके अंदर 12 सब ग्रुप्स थे, नॉट 12 आइटम्स, 12 सब ग्रुप्स इन दिस, राइट? बिकॉज देयर आर 700 आइटम्स, दे आर क्लासिफाइड इन अ वेरी एक्सटेंसिव मैनर. So out of this, the consumer food price index, out of these 12 subgroups, is tracking 10 items. What is it not tracking? Non-alcoholic beverages and prepared meals, snacks and sweets. Non-alcoholic beverages को ट्रैक नहीं करता, और किसको ट्रैक नहीं कर रहा है? Prepared meals, snacks and sweets. इसके अलावा whatever groups are there, they are being tracked, and this is then being used to construct a consumer food price index to give us an idea of what is the food inflation in the country, exact inflation on food. Since non-alcoholic beverages, water is not something which we have to pay for. Non-alcoholic beverages like Coca-Cola, etc., are not essential to your food consumption, and prepared meals, snacks and sweets are also not essential to your food consumption. Prepared meals, for example, the meals that we get, for example, in restaurants, etc., these are also not essential to your food consumption. These two were excluded, and they were then tracked in consumer food price inflation. Now, of course, CFPI will be very volatile. I'm sure you can understand कि क्योंकि ये mainly food को ही track कर रहा है, this is going to be a fairly volatile measure. But it is necessary to track this because it is also the most important expenditure that you are doing. सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको फूड एक्सपेंडिचर ही है. नाउ so what is the relevance of CFPI? It is highlighting the inflationary pressure faced by households, specifically from food items, and it also helps in identify the extent to which food prices are contributing to the overall inflation. ये बताओ मैं कैसे करूंगा? How will I do this? Second thing, how will I ensure? How will I check this? Second thing, सोच के बताओ. I can measure the CPI combined. मैं CPI combined को measure कर लूं कि इसकी वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, और मैं CFPI की वैल्यू देख लूं कितनी चेंज हो रही है. Right? This is approximately 50%, approximately 50% contributor in CPI combined. Approximately it is 50% contributor. Let's say CPI combined has increased by 5%, and let's say that consumer food price inflation is up by 10%.
then I can say that most of the contribution here, most of the contribution in change in CPI combined has happened due to CFPI. The other way is to check the change in CPI combined and to check the core inflation. Let's say CPI combined headline inflation is 5%, core inflation is only 2%. So I can say that about 3% contribution is coming from food and fuel. And out of that 3%, how much is coming from food, I can measure from here. So now that I have various type of measures, I can now see how much food prices are impacting inflation, how much fuel prices are impacting inflation, what is overall inflation, headline inflation, what is combined inflation, which is CPI combined. Then I can check what is core inflation. I can check refined core inflation. I can also check the food price inflation. Now I have a much better idea of how prices are actually changing. Now, the other thing that we saw, this is currently we had been seeing something called CPI. CPI are consumer prices at the consumer level. Consumer price index is at the consumer level, the thing that you and me are paying. But like we saw, there is a producer first. हमने WPI पहले भी देखा था. There is a producer first. Let's say there are producers of wheat. There will be a wholesaler. Wholesaler क्या करेगा? He will take this from various producers. He will take the wheat. These are all wheat producers. From a lot of producers, they will take the wheat. Then this wholesaler will send further to distributor, then to retailer, and we are the ones who are buying from the retailer. So we are the retail consumer. This is the idea. अभी हमने कहां price levels measure किए हैं? We have measured price levels at this level. What are the price that we are paying? We can also measure the price levels here at the wholesale level. कि यहां पर क्या प्राइस चल रहा है, ये भी तो एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. तो what is the price that is being transacted at the wholesale level? This also I can measure. If I measure this will be called the wholesale price index. And what do we know about WPI? That services cannot be measured here, because services are not transacted at the wholesale level. Only goods are transacted at the wholesale level. If I start measuring the price at this level, I will call it the wholesale price index. Now let us look at some of the characteristics of wholesale price index. This is measuring the price changes at the wholesale level. Now, here services are excluded. Of course, this also we know that services are not counted here. Now, who is publishing wholesale price index? This is the first thing. Who is publishing this? Office of Economic Advisor under the DPIIT. DPIIT stands for Department of Promotion of Industry and Internal Trade. Department for Promotion of Industry and Internal Trade. This department is actually publishing the wholesale price index. Now, like we saw, there were some components in consumer price index. Similarly, there are some components in wholesale price index. What are the components in wholesale price index? Firstly, there are manufactured goods. Manufactured goods are 64%. Then there are primary goods. This is 22%. And energy is 13%. Primary, manufactured, what are the various sectors of the economy? This we will see when we come to sectors of economy, but I'm sure you have an idea of what primary and secondary and tertiary means. एक basic idea तो हमारे पास होता ही है, but we will come to it when we come to sectors of the economy. So, primary goods are about 22.62%. Manufactured goods are 64%. And energy is 13%. The base year for this is 2011-12. This is the base year that we use for wholesale price index. What was the difference? What was the key difference first in wholesale price index? पहला key difference क्या है कि services measure नहीं होती. What is the other key difference that we were seeing when we were looking at factor price, basic price, market price? एक और key difference था.
What is the other key difference when I look at WPI? एक तो सर्विसेज नहीं है, दूसरा डिफरेंस क्या है? आप पढ़ चुके हो ये ऑलरेडी. The effect of taxes. The effect of taxes is not counted in WPI. टैक्स का इफेक्ट यहां पर काउंट नहीं किया जाता. सो इट गिव्स अ डिफरेंट मेजर, एक अलग तरह का मेजर ये देता है. Now I want to tell you a little bit about revisions in WPI. What are revisions in WPI? How we have changed WPI over the years. पहले क्या होता था और अब क्या होता है? Over the years, firstly, the structure of commodities that are counted here have changed. Earlier, there were 676 commodities. From this, we added 199 commodities, removed 146 outdated commodities, and today it has 697. ये important नहीं है. You don't need to look at this. We just need to look at that it has been revised over time. Over time इसको revise किया गया है. इसके अंदर जो commodities थी, जो actual goods थे, जिनको count किया जा रहा था, जिनका price देखा जा रहा था, उनको change कर दिया गया. Now, indirect taxes have been excluded. पहले indirect taxes भी count यहां पर करते थे. That was a flawed methodology. Now there is no counting of indirect taxes in WPI. Rather than arithmetic mean. Arithmetic mean क्या होता है? A plus B plus C divided by 3. Geometric mean is used. What is geometric mean? A into B into C का cube root. ऐसा geometric mean हमने कहीं और भी देखा है? What is the other types of geometric mean that we have seen? And we have also introduced something called wholesale food price index. ये क्या होता है ये मैं अभी बताऊंगा आपको. Good. We saw geometric mean when it came to HDI. तो हमारा जो WPI है आज, उसमें एक तो there are the WPI today has first our base year is 2011-12. Who is calculating WPI? DPIIT. Structure of commodity group is 697 commodities are there. Indirect taxes are not counted. Geometric mean is used, not arithmetic mean are used. And something called wholesale food price index is also constructed. अब ये क्या है? If I look at wholesale food price index, this is calculating food prices at the wholesale level. Now, if I am counting food prices at the wholesale level, तब मैं क्या करूंगा? WPI में there were three things. WPI had three things. One was manufactured goods, then primary goods, then energy. इस manufactured goods में there can be food products, right? जो food processing के बाद बनते हैं, जैसे कि goods like chips, for example. And there can be primarily food articles. For example, apple is a food article. Jam is a manufactured food product. Potato is a food article. And chips are a manufactured food product. Wheat is a food article. And flour is a manufactured food product. जो manufacturing के बाद बनता है. It's not actually जो food article है that we take directly from the farm. उस पे कोई processing करते हैं. Then it becomes a manufactured item. तो ये दोनों चीजें काउंट करता है. Because we were looking at WPI में तीन चीजें देखी जाती हैं. Manufactured goods, primary goods and energy. In the wholesale food price index, इसमें सिर्फ food का अगर मैं पार्ट देखूं तो प्राइमरी के फूड आर्टिकल्स को मुझे काउंट करना चाहिए और मैन्युफैक्चर्ड के फूड प्रोडक्ट्स को मुझे काउंट करना चाहिए. देन it is seen that in the primary when I look at food articles and in manufacturing I look at food products, this represents about 24.38% of the weight in WPI. Again, this number is not important, just the idea is important. What I'm trying to tell you is that WPI in itself has three things. It has classified in three things: manufactured goods, primary goods and energy. In manufactured goods, there are some food manufactured goods like apple jam, like potato chips. There are some primary goods such as food articles like apples and potatoes themselves. If I look at this item, if I look at this is 24%
of this total WPI. So 24% of WPI is food. So now if I look at CPI, in CPI what was the weightage of food? In CPI combined, the weightage of food was almost close to 50%. In WPI, what is the weightage of food? It is close to 24%. Now when food prices changed, आज मान लो food prices change हो गए, which will be more sensitive? ज्यादा सेंसिटिव कौन सा है इनमें से, CPI या WPI? ऑब्वियसली CPI is more sensitive to change in food prices. ये बात आपने इससे आज से पहले कहां सुनी है? Where have you heard this thing that I just said before today? देखते हैं मेरी चेंज टीचिंग मेथोडोलॉजी का कोई फायदा हुआ या नहीं. शाबाश, बिना सोचे नोवेयर लिख दो. अरे हमने एमसीक्यूज देखे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन था, कोई एक स्टेटमेंट थी क्या उसमें कि WPI इज मोर सेंसिटिव टू प्राइस ऑफ फूड? हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे देखे थे, तो मैंने आपको कहा था सॉल्व मत करो बट पढ़ते रहो. वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं थे कि WPI इज मोर सेंसिटिव टू फूड, CPI इज लेस सेंसिटिव टू फूड. है ना? I thought you will remember those questions and pay more attention when actual questions are coming on the board. ये तो एग्जैक्ट वही क्वेश्चन का आंसर ही तो है ये. मैं बोलूंगा तो ही याद होगा, तो फिर आपको कैसे, आपके मार्क्स कैसे आएंगे? फिर आपको खुद से याद होना चाहिए ना. दिस इज द एग्जैक्ट थिंग वी हैड डिस्कस्ड. एनीवे, नाउ अब WPI की बात करते हैं. इन 2019 under the chairmanship of Shri Ramesh Chand, who was a member of the Niti Aayog, a working group was set up for revision of WPI. 2019 में एक कमेटी बनाई गई under chairmanship of Shri Ramesh Chand, who was member of Niti Aayog, to have some changes in WPI. जब भी कोई कमेटी बनाई जाती है इन द गवर्नमेंट, देयर इज समथिंग कॉल्ड टर्म्स ऑफ रेफरेंस. ये चीज आप फाइनेंस कमीशन के लिए भी पढ़ोगे, आपको पता होना चाहिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस टर्म का क्या मतलब होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेंस? टर्म्स ऑफ रेफरेंस मींस दैट इस कमेटी को हमने क्या क्या पूछा है, व्हाट आर द क्वेश्चंस आस्क्ड टू दिस कमेटी, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस आस्क्ड फ्रॉम दिस कमेटी, कि किन किन चीजों पे आपको रिपोर्ट करना है. हियर द टर्म्स ऑफ रेफरेंस दैट वर गिवन to this Ramesh Chand committee were: first, what should be the base year of WPI? अभी तो WPI का बेस ईयर 2011-12 है, बहुत पुराना है, तो आप बेस ईयर चेंज करो. फिर उन्होंने कहा रिव्यू द कमोडिटी बास्केट. जो कमोडिटीज इसमें इंक्लूडेड हैं, वॉट एवर कमोडिटीज आर इंक्लूडेड इन WPI, यू नीड टू रिव्यू दैट. थर्ड, इन्होंने कहा इंप्रूव द डेटा कलेक्शन एंड कंप्यूटेशनल मेथोडोलॉजी. कैसे हम डेटा कलेक्शन और कंप्यूटेशनल मेथोडोलॉजी बेटर कर सकें WPI की. एंड फोर्थ टर्म्स ऑफ रेफरेंस वाज रेकमेंड अ रोड मैप टू स्विच फ्रॉम WPI टू PPI. ये अब हम समझते हैं WPI टू PPI हम कैसे स्विच कर सकते हैं, राइट? ये 4 रिकमेंडेशंस पूछी गई फ्रॉम रमेश चंद कमेटी कि आप बताओ कि ये चारों चीजें हम इंप्लीमेंट कैसे करें. रिवीजन ऑफ बेस ईयर तो हमें समझ आ रहा है क्यों बोला गया होगा. कमोडिटी बास्केट भी हमें समझ आ रहा है कि आउटडेटेड को हटाओ. इंप्रूव डेटा कलेक्शन एंड कंप्यूटेशनल मेथोडोलॉजी, ये भी हमें समझ आ रहा है कि बेटर WPI को हम कैप्चर कर पाए, है ना. क्या नहीं समझ आ रहा? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस टर्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स? ये समझते हैं. ये समझने के लिए पहले हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखनी होगी. हमने अभी क्या कहा? हमने कहा मैं एक लेवल पे प्राइस मेजर करता हूं, यहां कॉल्ड WPI, होलसेल पे. होलसेल से जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से जाता है रिटेलर के पास, रिटेलर बेचता है कंज्यूमर को. दूसरा लेवल में यहां मेजर करता हूं, आई मेजर प्राइसेस हियर कॉल्ड CPI.
अब आप एक बात सोच के बताओ, WPI और CPI, WPI और CPI should move up and down together or not? मीनिंग दे आर नॉट द सेम, इसमें एक डिफरेंस आएगा, यहां तो सर्विसेज इंक्लूडेड है, यहां सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है। बट जब WPI बढ़े, क्या CPI को बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? शुड दे मूव टुगेदर और नॉट? यस और नो? सोच के बताना। नाउ एट फर्स्ट लुक अगर हम ऐसे एक बार देखें, एट फर्स्ट लुक इट लुक्स लाइक दे शुड मूव टुगेदर। हमें देख के जरूर लगता है कि इन्हें साथ में मूव करना चाहिए, कि यहां पर लेट से वीट का प्राइस बढ़ गया, जब वीट का प्राइस यहां बढ़ गया तो यहां भी बढ़ जाएगा, यहां बढ़ जाएगा तो यहां भी बढ़ जाएगा, यहां बढ़ जाएगा तो यहां भी बढ़ जाएगा। आइडियली दे शुड मूव टुगेदर। नाउ लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ व्हाट हैपेंड इन कोविड। अब हम सोचते हैं कि कोविड में हुआ क्या, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग कोविड ईयर्स। ड्यूरिंग कोविड ईयर्स व्हाट हैपेंड टू एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया? जो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया था उसको क्या हुआ? Agriculture sector of India, everyone who was a migrant in urban areas, they returned back to their villages. When they returned back to their villages, they started contributing to agricultural sector. When agriculture sector was being contributed to, agriculture was the only sector that showed growth in these years. एग्रीकल्चर सेक्टर में तो काफी ग्रोथ हुई इस टाइम पे, है ना? आपको याद होगा एग्रीकल्चर वाज द एट दैट टाइम, अगर आप इकोनॉमी की न्यूज थोड़ी भी फॉलो करते हो, आपको याद होगा कि उस टाइम पे काफी ग्रोथ हो रही थी एग्रीकल्चर की। एट दैट टाइम अ लॉट ऑफ ग्रोथ वाज हैपनिंग, दैट वाज द ओनली सेक्टर दैट वाज ग्रोइंग, बाकी तो कोई सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा था। तो यहां पर देयर इज ग्रोथ। ग्रोथ का क्या मतलब? आउटपुट वाज इंक्रीजिंग, मतलब सप्लाई वाज इंक्रीजिंग। तो होलसेलर के पास जो सप्लाई आ रही थी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, हियर सप्लाई हैड इंक्रीज्ड, है ना? तो इफ सप्लाई हैड इंक्रीज्ड, व्हाट वुड बी हैपनिंग टू प्राइसेस एट होलसेल लेवल? सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस को क्या होता है? सप्लाई हैड इंक्रीज, व्हाट वुड बी हैपनिंग टू प्राइस एट होलसेल लेवल? याद करो, इफ सप्लाई इज इंक्रीजिंग द प्राइस वुड बी फॉलिंग, सो एट द होलसेल लेवल द प्राइस वर फॉलिंग डाउन, है ना? अब होलसेलर के पास तो आ गया, होलसेलर हैज मोर सप्लाई, बट प्रॉब्लम क्या थी कोविड में? प्रॉब्लम क्या थी कोविड में कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन यहां होती है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन दैट हैपेंस हियर, this became extremely costly because people were not allowed to move from one place to the other, right? Distribution was a major problem, there were lockdowns, आप यहां से यहां चीजें पहुंचा ही नहीं पाओगे। So the supply that was reaching here in the retail markets, wholesale में तो सप्लाई ज्यादा है, यहां जो सप्लाई पहुंच रही थी in the retail markets, the supply that was reaching was very low. So what was happening in the retail markets? In the retail markets the supply was low, in the retail markets the prices were high, है ना? तो यहां पर प्राइस को क्या हो रहा था? प्राइस वाज राइजिंग। तो अब CPI को तो बढ़ना चाहिए, WPI को घटना चाहिए, है ना? और अब ये देखो जादू, दिस इज द एक्चुअल फिगर फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर। CPI तो यहीं पे, WPI has gone into negative in COVID। अब मुझे बताओ CPI बढ़ा क्यों नहीं? CPI स्टेबल क्यों रहा? घटा नहीं CPI, बट बढ़ा भी तो नहीं, इट इज स्टेबल। व्हाई इज इट स्टेबल हियर? व्हाई इज CPI स्टेबल हियर? बताओ।
अरे डिमांड भी तो कम हुई होगी ना, डिमांड फ्रॉम कंज्यूमर्स ऑल्सो फेल। एक तरफ सप्लाई कम हुई, डिमांड भी कम हो गई, तो सीपीआई स्टेबल रहा। डिमांड ऑल्सो डाउन, सप्लाई ऑल्सो डाउन, इट स्टेड स्टेबल। यहां पर क्या हुआ, डिमांड तो यहां भी कम हुई होगी। अगर यहां डिमांड कम हो रही है, अगर कंज्यूमर कम डिमांड कर रहे हैं, तो होलसेलर भी कम डिमांड करेंगे, वो बेचेंगे किसको। यहां पर क्या हुआ, डिमांड तो कम हुई, सप्लाई बढ़ी रही, बिकॉज पीपल वेंट बैक टू द फार्म्स। तो यहां पर बहुत फॉल देखने को मिला, यहां पर स्टेबिलिटी देखने को मिली। नाउ यू सी आफ्टर दैट कोविड इवेंट देयर इज अ ह्यूज डाइवर्जेंस बिटवीन सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। एक डाइवर्जेंस है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच में। वन ऑफ द रीजंस इन कोविड वाज डिफरेंशियल डिमांड एंड सप्लाई पैटर्न्स। वन ऑफ द रीजन इज कि डिमांड एंड सप्लाई पैटर्न्स आर वेरी डिफरेंट, राइट। एक दो चीजें और कंसिडर करते हैं। लेट्स कंसिडर अ कपल ऑफ अदर थिंग्स. What are the various other differences between CPI and WPI? Why am I now? Let's try to explain why are these divergences occurring. ये जो divergence यहां पर हो रही है between CPI and WPI, ये divergence क्यों है? Why is this divergence occurring? Let's try to explain that now. कि divergence कहां से आई? If I look at this divergence, one can be because of the various supply chain disruptions. Supply chain disruption का क्या मतलब? That from the wholesaler to the retailer, the chain of supply has been disrupted, right? एक तो ये reason है. This is one, supply chain disruption. What is the other reason? Services जो हैं, they are not counted in WPI. WPI में services count नहीं होती ना. If WPI में services are not counted, WPI में services are not counted, then also there will be a problem. Services के price में भी तो change हुआ होगा, right? अब हम कोविड के बियॉन्ड जा रहे हैं. We are just trying to understand why there is a difference between CPI and WPI figures. अलग अलग नंबर्स क्यों आते हैं CPI WPI फिगर्स में? WPI में सर्विसेज काउंट नहीं होती. अब एक चीज देखते हैं, टैक्स का इफेक्ट. ये अब हम बड़ी ध्यान से सुनते हैं कि टैक्स का इफेक्ट कैसे पड़ता है. याद करो इन कोविड, अगर आप कोविड में आप थोड़ा बहुत भी न्यूज फॉलो करते थे, यू रिमेंबर दैट द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल, दिस केम इन न्यूज अ लॉट. व्हाट हैपेंड टू द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इन कोविड? क्योंकि डिमांड फॉल हो गई थी. व्हाट हैपेंड टू द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इन कोविड? एकदम से क्या हुआ था क्रूड ऑयल प्राइसेस को कोविड में? याद होगा, दिस वाज वेरी मच इन द न्यूज. The price of crude oil had very surprisingly during COVID become negative. Negative हो गया था price of crude oil. It was not just very low, it had become negative. Negative मतलब people were actually paying you. When the price is negative is, it means people are paying you to take oil. कि आप मेरे से ऑयल ले जाओ और पैसे भी ले लो, right? Price had become negative. What does negative mean? That you take this from me and you take money. Anyone knows how it was? चलो मैं बता देता हूं नेगेटिव कैसे हुआ. प्राइस वॉज फॉलिंग, ठीक है. कैसे, हाउ डज प्राइस बिकम नेगेटिव? हाउ कैन द प्राइस ऑफ समथिंग बिकम नेगेटिव? कि मैं आपको ऑयल भी दूंगा और मैं कहूंगा पैसे भी ले लो. अगर ऐसा है देन आई शुड जस्ट स्टॉप प्रोडक्शन. अगर मुझे अपना प्रोड्यूस बेचने के लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, देन आइडली आई शुड स्टॉप द प्रोडक्शन. मेरा क्या फायदा हो रहा है? मैं प्रोडक्शन रोक ही देता हूं, या तो मैं प्रोड्यूस भी करूं और आपको पैसे भी दूं. हाउ डिड इट बिकम नेगेटिव? ये समझते हैं. It was more expensive to stop production. It was more expensive to stop production than to give out money for oil. अगर उन्हें प्रोडक्शन रोकनी पड़ती, उनको लगते लेट से 1 लाख रुपीस, प्रोडक्शन रोकने की कॉस्ट थी 1 लाख रुपीस, तो उन्होंने कहा प्रोडक्शन करते रहो और लोगों को 50,000 रुपए दे दो ऑयल खरीदने के लिए. बिकॉज दे डिड नॉट हैव स्पेस लेफ्ट and the cost of stopping production was more than the cost of giving it out for free. So they said that price became negative. अब जब प्राइस नेगेटिव था कोविड में, क्रूड ऑयल का प्राइस नेगेटिव था. क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग होती है, रिफाइनिंग के बाद वो पेट्रोल बनता है. What happened to petrol prices in COVID?
पेट्रोल प्राइसेस जो हम पे कर रहे थे, कंज्यूमर पेट्रोल प्राइसेस, at the consumer level petrol prices in COVID, they were same. कुछ चेंज नहीं हुआ, तब भी 100 रुपए लीटर था. They were the same. They did not change. Almost the same. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा, but they were almost the same. Pretty much the same. Why? Because जो यहां पर reduction हुई, whatever reduction happened here, consumers were charged higher taxes. गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया. जब गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, वी पेड द सेम अमाउंट. सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, हमने तो सेम अमाउंट पे किया, राइट? वी पेड द सेम अमाउंट. ऑल्दो दिस वाज नेगेटिव, टैक्स बढ़ गया. अब बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ टैक्स व्हाट हैपेंड? अब अगर मैं टैक्स का इफेक्ट देखूं, WPI का क्या होना चाहिए यहां पे? बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल should fall down and CPI should rise or at least stay the same. CPI में तो कोई चेंज नहीं आया because your as a consumer the price you were paying is still the same. For WPI the price you are paying as a wholesaler of crude oil वो तो बहुत कम हो गया, नेगेटिव हो गया, तो WPI तो बिल्कुल फॉल कर जाना चाहिए. और CPI सेम बिकॉज सरकार ने टैक्स लगा दिया, गवर्नमेंट को उस टाइम पे रेवेन्यू भी चाहिए था, राइट? सो एट दिस टाइम देयर वाज अ ह्यूज डाइवर्जेंस. अब देखते हैं क्या हुआ. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. जब ये इंसिडेंट हो गया, इसके बाद क्या हुआ? When this incident happened, post COVID देखते हैं what happened. Post COVID the price of crude oil increased drastically. नेगेटिव से तो अब बहुत ऊपर हो गया. अगर मैं नेगेटिव से काउंट करूं तो बहुत बढ़ गया. इफ इट वाज लेट्स से -$10 पर बैरल, कि एक बैरल आपको स्टोर करने के पैसे दिए जा रहे थे, नाउ इट इज अबाउट $80 पर बैरल. तो एकदम से ये तो बहुत ऊपर हो गया. लेट्स लुक एट द प्राइस ऑफ पेट्रोल. पेट्रोल का प्राइस अभी भी ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, मतलब देयर इज नो ड्रास्टिक चेंज इन पेट्रोल प्राइस. पेट्रोल प्राइस जितने नॉर्मल लेवल से ऊपर बढ़ता रहता है, उतने ही नॉर्मल लेवल से ऊपर बढ़ता जा रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि अब देयर इज हाई क्रूड ऑयल प्राइस. क्रूड ऑयल का प्राइस तो हाई है, राइट? क्रूड ऑयल प्राइसेस आर हाई, बट गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड द टैक्सेस ताकि आपको बर्डन फील ना हो. गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, आपको सेम ही बर्डन फील हो रहा है. You are not realizing the change in the market at the back end, at the wholesale level. Why? Because there is effect of taxation. तो आपको नहीं पता चलता कि पीछे क्या क्रूड ऑयल का चेंज है. पर बैरल प्राइस ऑफ ऑयल changes every day. पेट्रोल प्राइस changes maybe once a month, maybe twice a month. WPI में अगर हम देखें होलसेल लेवल पे पेट्रोल प्राइस, क्रूड ऑयल प्राइस चेंजेस एवरी सिंगल डे, राइट? बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट है. जैसे डॉलर का प्राइस एवरी सिंगल डे चेंज होता है, उसका भी प्राइस एवरी सिंगल डे चेंज होता है. यहां पर वी डोंट फील इट बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन. टैक्सेशन न्यूट्रलाइजेस दैट इफेक्ट. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन कोविड. अब हम वापस उस ग्राफ को देखते हैं. लेट्स लुक एट दिस ग्राफ अगेन. WPI fell down to negative, then suddenly increased. ये क्या हो रहा है? ये रिकवरी हो रही है फ्रॉम कोविड. This is why the WPI is rising. I'll use a different color. A recovery is happening post COVID, therefore WPI is rising like this. But CPI again stays stable. CPI नीचे गया, फिर सेम लेवल, कुछ खास चेंज नहीं है. इट्स इन द सेम रेंज. Why is CPI in the same range? Again because of effect of taxation, right?
So CPI stays in the same range because of effect of taxation. WPI is changing, है ना? Now ये हमने देखा कि दोनों का पर्पस एंड कॉम्पोजिशन इज डिफरेंट. सीपीआई में फूड आइटम्स ज्यादा हैं, डब्ल्यूपीआई में मेनली मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं. डब्ल्यूपीआई में ज्यादा इंपोर्टेड आइटम्स भी हैं. मोर मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स आर काउंटेड इन डब्ल्यूपीआई, राइट? नाउ बेस इफेक्ट इज ऑल्सो डिफरेंट. सीपीआई का it we are comparing year on year. CPI has always stayed at a stable level. WPI suddenly went down in 2020. तो अगर कोई चीज suddenly एक बार नीचे जाती है, then when the recovery happens, we will see a marked shift in graph. So there was a lot of divergence between CPI and WPI. CPI अलग लेवल पे चल रहा है, WPI अलग लेवल पे चल रहा है. Ideally, like we saw, they should be moving together. But because of all these reasons, they were not moving together. Therefore, because of this problem occurring, a recommendation has been staying for a very long time in the government to replace both CPI and WPI, or rather add something new called the producer price index. समझ आई बात? CPI measures at consumer level, WPI measures at wholesale level. मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं कौन से इंडेक्स को यूज करूं? सीपीआई और डब्ल्यूपीआई मेरे हिसाब से सेम लेवल पे चलने चाहिए, बट बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स लाइक डिफरेंट बास्केट ऑफ गुड्स, डिफरेंट इफेक्ट ऑफ टैक्स, डिफरेंट इफेक्ट ऑफ इंपोर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई डोंट मूव टुगेदर. डब्ल्यूपीआई नेगेटिव होके पॉजिटिव हो गया, सीपीआई सेम लेवल पे रहा. नाउ सिंस दीज टू इंडेक्सेस आर नॉट मूविंग टुगेदर, there must be some other index that I can use to actually track prices. This proposal was given then to introduce the producer price index. कि PPI इंट्रोड्यूस करो, मे बी दिस विल स्टे एट अ मोर स्टेबल लेवल. ये बात समझ आई? नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज PPI. इंडिया करंटली डज नॉट हैव अ PPI. ये इंडिया में इस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता है. ये सिर्फ एक प्रपोजल है. ये प्रपोजल किस चीज के लिए है? ये प्रपोजल रखा गया है और हमने ये देखा ऑलरेडी that this sort of proposal was given earlier here under Ramesh Chand committee, right? अगर आपने आज से पहले कभी भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आपने प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का नाम जरूर सुना होगा, बट क्यों प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आता है और क्यों बनाना जरूरी है, ये आई एम श्योर आपको नहीं पता होगा. रमेश चंद कमेटी को बोला गया डब्ल्यूपीआई से पीपीआई पे आओ. क्यों बोला गया? बिकॉज देयर इज ह्यूज डाइवर्जेंस. दिस वाज इकोनॉमिक सर्वे 2020. 2021 में आया इकोनॉमिक सर्वे में के चेंज दीज थिंग्स. ठीक है, ये चीजें चेंज करो, गो फ्रॉम डब्ल्यूपीआई टू पीपीआई, चेंज द बेस ईयर एक्सेट्रा. फिर ये रिकमेंडेशन आई पीपीआई की. ठीक है, एंड इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि इकोनॉमी जो है वो एक करंट अफेयर्स बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है, वो एक थीम बेस्ड सब्जेक्ट है. एक थीम चल रही होती है इकोनॉमी में, और वो थीम जब चलती रहेगी तो उस पर क्वेश्चन जरूर आएंगे. इफ अ थीम इज रनिंग, if a theme is running, then questions on it will definitely be asked. Because we don't have an effective index to measure, do we have an effective policy to control inflation? This question was asked in 2024, this year in the mains. इसी साल ये क्वेश्चन पूछा गया. But there is so much backstory. There is so much backstory to where this is coming from. इंडेक्स ही नहीं है ना ट्रैक करने का फूड इन्फ्लेशन ढंग का. जब इंडेक्स ही नहीं है तो इफेक्टिव पॉलिसी कैसे बनाओगे आप? समझ आया?
आई होप सो फार थिंग्स आर क्लियर कि पीपीआई क्या चल रहा है, what was CPI, what was WPI, why there was divergence between the two, and why there is a proposal now to introduce PPI. Is this clear to you? अरे ये क्वेश्चन हम कल देखेंगे, वी विल सी आरबीआई क्या करता है ना। अब नाउ लेट अस लुक एट व्हाट द पीपीआई एक्चुअली इज। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या है? अभी देयर इज नो सच इंडेक्स इन इंडिया। इस टाइप का कोई इंडेक्स अभी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता। वी आर प्रिपेयरिंग टू फाइनलाइज दिस। हम ट्राई कर रहे हैं कि ये फाइनलाइज हो जाए। क्यों? देखते हैं क्यों हम ये कर रहे हैं। बिकॉज इट इज मेजरिंग द change in the prices of goods and services at the producer level। ये प्रोड्यूसर लेवल पे काउंट कर रहा है। दिस इज एक्चुअली काउंटिंग द चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट प्रोड्यूसर लेवल। मेजर ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन इनपुट कॉस्ट टू प्रोड्यूसर्स एट द प्रोड्यूसर लेवल। तो इस स्ट्रक्चर में ये एक्चुअली कहां प्राइसेस मेजर करेगा? वेयर विल पीपीआई मेजर प्राइसेस इन द स्ट्रक्चर? PPI when introduced will measure prices here। कि यहां क्या प्राइस है। Obviously there is difference between this and this। यहां पे भी डिफरेंस है कुछ, यहां पर भी कुछ सप्लाई है, यहां पर भी कुछ फैक्टर्स विल बी कंसिडर्ड। कितना प्राइस आगे पास ऑन किया गया, कोई फैक्टर्स ने डिस्ट्रक्टेड किया एक्सेट्रा, ये भी हमने देखा था। So it is actually going to measure at producer level, similar to factor cost। It's not the same as factor cost, it is similar to factor cost। The same logic is there, same logic is there। We saw factor cost, basic prices and market prices, similar logic is there। It's not the same, don't confuse the same। The similar logic is there, it is going to measure at producer level। इस लेवल पे मेजर करेगा। What is the other advantage of PPI over WPI? यही कहा था ना उस कमेटी ने कि WPI की जगह let's go to PPI। What is the other advantage? WPI does not measure services, but producer level prices you can measure even for services। We are the producer of this service, this coaching service for example। You can measure producer level prices, you can prices at our level, so you can measure producer level services also। So PPI will also count for services। So PPI will measure it at the final stage of production and it will exclude taxes। यहां पे भी taxes काउंट नहीं होंगे। बट जो अभी लिमिटेशंस हैं WPI की, WPI में अभी क्या प्रॉब्लम है कि उसमें सर्विसेज काउंट नहीं होती। WPI में सर्विसेज आर नॉट काउंटेड। सर्विसेज सेक्टर इज 55% ऑफ आवर जीडीपी। तो WPI कैन नेवर बी एन एक्यूरेट मेजर। आधी से ज्यादा जीडीपी तो वो काउंट ही नहीं करता अपने प्राइसेस में, वो सिर्फ गुड्स काउंट करता है। PPI will be able to count both goods and services। It will be a more precise measure of inflation। Why? Because ये टैक्सेस भी एक्सक्लूड कर देगा WPI की तरह, और ये सर्विसेज भी मेजर कर लेगा। सो प्योर प्राइस मूवमेंट, एक्चुअल प्राइस मूवमेंट कैप्चर करने के लिए ये बहुत अच्छा मेजर है, इसीलिए हम PPI पे जाना चाह रहे हैं। नाउ इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम दुनिया की सारी कंट्रीज देखें, इट इज PPI दैट इज मेजर्ड। मोस्ट कंट्रीज में यही मेजर किया जाता है। और जो यूनाइटेड नेशंस का सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स है, ये टर्म आपने पहले कहीं सुनी है? SNA ऑफ UN। दिस टर्म यू हैव हर्ड बिफोर, SNA ऑफ UN। इसमें भी PPI को ही वेटेज दी गई है। एंड देयर इज अ CPI WPI डाइवर्जेंस। अगर मैं WPI देखता हूं तो कहता है इन्फ्लेशन नेगेटिव है। CPI देखता हूं, अरे फिर तुम नहीं कैसे बोल रहे हो, ये जीडीपी में था ना, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स कंप्लायंट, SNA कंप्लायंट। हमने देखा तो था यार, ऐसे भूलो मत, SNA हमने देखा था जीडीपी मेजरमेंट में। CPI WPI डाइवर्जेंस है। WPI से देखता हूं तो कहता है इन्फ्लेशन नेगेटिव, CPI से देखता हूं तो कहता है इन्फ्लेशन 6%। नाउ हाउ डू आई चेक कौन सा यूज करूं? तो कहा जा रहा है कि ये जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, दिस इज गोइंग टू बी the one that I can use
एक तो इसमें सर्विसेज भी इंक्लूडेड है, ये प्रोड्यूसर लेवल पे देखता है तो प्योर कॉस्ट देखता है, इसमें टैक्सेस भी एक्सक्लूडेड हैं, राइट, एंड इट मेजर्स द ट्रू प्राइस मूवमेंट्स. Most of the countries of the world are also looking at PPI and CPI WPI divergence. This makes a strong case that I should switch to a different index which is more accurate in telling me the amount of inflation that is happening. This is the idea of the producer price index. ये लॉजिक सोच के प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को लाया गया या लाने की प्रपोजल है. नाउ इफ यू वर टू आस्क मी, very likely that a question on producer price index is going to come either in prelims next year or in the mains in next year or 1 year after that. Because ये बात ऐसी है, इसी टाइप के क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, हम अभी तक देख रहे हैं. अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस देखे थे वो पहले आ चुके थे. सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन इकोनॉमी आर जनरली नॉट आस्क्ड. इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट. हमने पिछले भी क्वेश्चंस देखे हैं इसी टाइप के थे. नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ओनली विल बी आस्क्ड इन द फ्यूचर वेयर पीपीआई विल बी आस्क्ड. आई होप आपको ये सारा लॉजिक समझ आया, राइट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लॉजिक. फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट एंड बेसिक प्राइस are different from what CPI, WPI and PPI are measuring. They are just an analogy to make you understand. They are just an analogy to make you understand. ये सिर्फ एक analogy है, right? Don't confuse the same thing. They are not the same thing. There are many different factors also at play here. Transmission of costs is also at play here. We don't need to go in that much detail, but they are just an analogy to make you understand, right? Now we will now study the types of inflation based on speed of inflation and cause of inflation. Why is inflation happening? हमने already दो टाइप की inflation पढ़ी है, demand pull inflation, cost push inflation. This we have already seen, right? We have also seen two other terms, deflation and disinflation. This also we have seen, ये भी term हमने देखी है. Now we will look at various other types and questions on inflation. Types of inflation बाकी हम अभी देखेंगे. Before that we will take a 2 minutes break. We will see various different types of inflation. 3 मिनट ले लेते हैं ब्रेक, कोई नहीं. I will repeat it again. Factor cost, basic price and market price. WPI, PPI and CPI are very different from each other. To explain how they are different, it will take me 2 hours and it is absolutely not relevant to you. The analogy I gave you was to make you understand how prices can be different at different levels. We don't have to equate the two things together. ठीक है. तो WPI में प्रोडक्शन टैक्सेस एंड सब्सिडीज हैं, PPI में प्रोडक्शन टैक्स. दिस इज नॉट टू बी काउंटेड. ओके.
ऑल राइट, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस एक दो. थैंक यू. Prices of crude have fallen. Trivandrum, how can this be confusing yaar कि crude is cheaper, government has put more tax. Anyway, देखो हमें ना अभी दो चीजें पढ़नी है. It is 6:12. We will, please don't spam the chat. It is 6:12. We have to read till 7:30. There are two things we have to study before we go, at least two. One is effects of inflation. हमने याद है उस पर भी क्वेश्चन था. Inflation benefits the debtors, inflation benefits the lenders. इस टाइप का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, right? That was one type of question that we had to see. The other type of question that we will have to see is what are the various types of inflation. अब देखो जो types of inflation है वो तो बेसिक है कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, गैलपिंग इन्फ्लेशन, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, वो मुझे उतना कंसेप्चुअली हैवी नहीं लगता, तो वो हम थोड़ा बाद में देखते हैं. अभी आई नो आफ्टर 1 आवर आप लोगों की एबिलिटी टू लिसन टू मी एंड अब्सॉर्ब कॉन्सेप्ट थोड़ी खत्म हो जाएगी. तो पहले जो थोड़ा सा कंसेप्चुअली टफ पार्ट है उसको एड्रेस कर लेते हैं. द कंसेप्चुअली टफ पार्ट इज इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन. फर्स्ट वी विल एड्रेस इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, देन वी विल एड्रेस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. तो पहले इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन देख लेते हैं कि क्या इफेक्ट्स हैं इन्फ्लेशन के, किसको इन्फ्लेशन से फायदा होता है, किसको इन्फ्लेशन से नुकसान होता है. दिस विल क्लैरिफाई अ लॉट ऑफ डाउट्स. ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है, इसको हम देखेंगे. कुछ नहीं है, बस इन टर्म्स को याद करना है. अभी हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन. ठीक है. नाउ इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन वी विल सी ऑन कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, we will see on lenders and debtors, we will see on savings and investment, and we will see on taxpayers and tax collectors. Now इन चार चीजों से बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू देन अंडरस्टैंड मॉनेटरी पॉलिसी. तो अब रिक्वेस्ट है, अभी 6:15 हो रहे हैं, 7:15 तक ये खत्म हो जाएगा. 7:15 तक कोई चैट स्पैम नहीं करेगा. These are conceptual topics जो समझने में दिक्कत आएगी, तो ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, और चैट को स्पैम नहीं करेंगे. ठीक है. अब वन बाय वन चलते हैं. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कंज्यूमर्स. इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, है ना. जब प्राइस लेवल अप होगा, हमने कुछ ऐसा पढ़ा है ऑलरेडी, प्राइस, क्वांटिटी एंड डिमांड कर्व. व्हेन प्राइस गोज अप, क्वांटिटी डिमांडेड गोज डाउन, ceteris paribus. So when price goes up, how will consumers respond? They will reduce their quantity demanded. Quantity demanded by consumers will go down, right? But हमने ये भी पढ़ा है that some goods are like this and some goods are like this. This, as you might recall, is a luxury good. This is a necessary good. So जब consumers inflation face करते हैं, they will reduce their quantity demanded. In case of luxury good, there will be huge reduction in quantity demanded. But in case of necessary goods, even with price rise, they cannot reduce their quantity demanded. Now it depends on what sort of goods you are consuming. If I want to check what is your total expenditure, I want to check what is your total expenditure. From this graph, I can check price that you are paying into quantity that you are consuming is your total expenditure. When you are going to face inflation, price is going to go up. As a result, you are going to reduce your quantity demanded, but the change will not be proportional.
हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए 10% से और क्वांटिटी डिमांडेड आप सिर्फ 2% से कम करो, then your total expenditure will increase. At least if we look at necessary goods, अगर हम सिर्फ necessary goods की बात करें, here we know that if we look at price elasticity of demand in case of necessary goods, right? How does demand respond to price? It is relatively inelastic. We have read this thing. So at least in cases of necessary goods, price goes up, total expenditure will go up. Because demand तो एक level से कम हो नहीं सकती. At least the expenditure on necessary goods will go up for consumers. Right? And overall, what will consumers do? They will reduce their quantity demanded. Maybe not as much as the price goes down. थोड़ा तो कम करेंगे ना quantity demanded. यहां पर थोड़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई है ना, प्राइस ऊपर हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड गोज डाउन, सेम लेवल पे नहीं हुआ, राइट? दिस वी हैव रेड. लेट अस नाउ लुक एट द सप्लायर्स. इन्फ्लेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन सप्लायर्स. अभी जादू देखने वाले हो आप बहुत जल्दी. इन्फ्लेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन सप्लायर्स, ये ग्राफ भी हमने देखा है. Price and quantity supplied. As the price goes up of anything, my willingness to supply it will also increase. ये हम देख चुके हैं, right? So for suppliers or for producers, inflation will mean that they get more profit, but they will get it in the short run. Why will they get it in the short run? ये बात समझते हैं. इन्फ्लेशन से सप्लायर्स का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, दैट्स गुड, राइट? अगर मैं सिर्फ सप्लायर्स को देखूं, कीपिंग डिमांड एज कांस्टेंट, देन दिस ग्राफ इज राइट. एक्चुअली शॉर्ट रन भी हटा देते हैं, अभी सिर्फ इतना देखते हैं कि अगर सप्लायर्स हैं, एज इन्फ्लेशन इंक्रीजेस दे विल गेट मोर प्राइस फॉर देयर गुड. पहले इस गुड का प्राइस ये था, आज प्राइस ये है, दे आर गेटिंग दिस प्राइस नाउ, दे आर विलिंग टू सप्लाई दिस क्वांटिटी नाउ. Right? अब quantity supply that they are willing to supply is now increased. They are willing to supply an increased quantity. But what is happening to the quantity demanded by the consumer? Quantity demanded by the consumer is going down. Supplier is willing to supply more because of inflation, but quantity demanded is going down. Now, what is the ideal thing for the economy here? If the price goes up, supplier will supply more. If they will supply more, what does it mean? Output will be more. If output will be more, what will it mean? Employment will be more. Is this line clear? Is this line clear? अभी तक सिर्फ सप्लायर्स की बात कर रहे हैं. Is this line clear? यहां तक तो ठीक है सब कुछ. एक एक करके सारे वेरिएबल्स एक एक करके, सारे एक बारी में इकोनॉमी को नहीं समझना, स्टेप बाय स्टेप. यहां तक तो क्लियर है? If price goes up, let's look at consumer. They will demand less. ये भी क्लियर है, राइट? If price goes up, consumer will demand less. ये भी क्लियर है. Now, अब बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा? अब इस सिनेरियो में बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? Let's look at it from a supplier's perspective. सप्लायर की कंडीशन देखते हैं. प्राइस उठा, क्वांटिटी, I am willing to supply more. I am creating more output. I am getting more profits, more employment, right? But अगर प्राइस बहुत टाइम तक उठा रहा, let's say tomorrow इंटरनेट प्राइसेस बिकम डबल. कल इंटरनेट का प्राइस, जो भी प्राइस है इंटरनेट का आपको अभी, वो डबल हो जाता है ना? You are consumer of internet. I am also consumer of internet.
एकदम से तो मैं अपनी यूजेज कम नहीं कर दूंगा इंटरनेट की, मैं दे दूंगा प्राइस कम, चलो यार कोई नहीं दे दो, बट लेट से प्राइस ऑफ इंटरनेट स्टेज हाई, कॉन्स्टेंटली डबल, ईयर ऑन ईयर डबल होता जा रहा है। आज अगर 100 रुपए में मिलता है 100 GB डेटा, कल 200 रुपए मिले, फिर 400 में, फिर 800 में, फिर 1600 में, कॉन्स्टेंटली डबल होता जाए, I will reduce my consumption of internet. Eventually, I will reduce. Even if internet is a necessary good, even then, eventually I will reduce my consumption. यार इतना तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। तो अब यहां पर आइडियल कंडीशन क्या है? आइडियल कंडीशन है कि प्राइस बढ़े तो सही, बिकॉज प्राइस बढ़ने से आउटपुट बढ़ता है, प्राइस बढ़ने से इंप्लॉयमेंट बढ़ती है, तो प्राइस बढ़ना तो अच्छी बात है, बट इतना ना बढ़े कि डिमांड कम हो जाए। प्राइस बढ़े तो सही, प्राइस बढ़े तो सही, बट इतना ना बढ़े कि डिमांड कम हो जाए, राइट? लॉन्ग रन में डिमांड कम हो जाएगी तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो किस टाइप का प्राइस इंक्रीज होना चाहिए? एक लो लेवल का प्राइस इंक्रीज होना चाहिए, एक स्टेबल लेवल का प्राइस इंक्रीज होना चाहिए, लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन होता रहे, इतना इन्फ्लेशन ना हो जाए कि लोग अपनी डिमांड ही कम कर दें। अगर आज इंटरनेट के प्राइसेस 2% बढ़े तो मैं अपनी डिमांड कम नहीं करूंगा, 200% बढ़े तो मैं अपनी डिमांड कम कर दूंगा, राइट? सो अ लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। लो क्यों? कि इट शुड नॉट इंपैक्ट द डिमांड, और स्टेबल क्यों? सो दैट आई कैन प्लान फॉर इट। इन्फ्लेशन अगर कभी 200%, कभी 3%, कभी 500%, कभी -700% होगी, तो मैं प्लानिंग कैसे करूंगा इकोनॉमी की? सो द आइडियल कंडीशन हियर इज लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। यही बात मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं, दिस इज आवर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, low and stable rate of inflation is required, right? It is good for the economy. Low and stable rate of inflation is good for the economy. ऐसा भी नहीं है कि प्राइस बढ़े ही ना तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी, और ऐसा भी नहीं है कि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। सो इन्फ्लेशन इन द शॉर्ट रन benefits the consumers, benefits the suppliers, harms the consumers in the short run. In the long run, for the economy, it is good to have low and stable rate of inflation. Clear? ये बात क्लियर हुई? आप बहुत बार ये पूछते थे, सर इज इन्फ्लेशन गुड, इज इन्फ्लेशन बैड? तो अब एज एन इकोनॉमी में क्या चाहूंगा कि मेरी एक लो एंड स्टेबल रेट, एक स्टेबल रेंज हो, इस स्टेबल रेंज में, इस स्टेबल रेंज में ही मेरा हमेशा इन्फ्लेशन रहे। मैं चाहूंगा कि मेरा इन्फ्लेशन हमेशा एक लो रेंज में स्टेबल सा रहे, तब बढ़िया रहेगा, राइट? ऐसा रेंज इंडिया के लिए जो डिफाइंड है वो 2 to 6% है। गवर्नमेंट ने आरबीआई को बोल रखा है कीप इन्फ्लेशन बिटवीन 2 and 6%। क्यों? क्यों बोलूंगा मैं? बिकॉज इससे मेरी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती रहेगी, आउटपुट भी बढ़ता रहेगा, और इतना नहीं इन्फ्लेशन है कि लोग अपनी क्वांटिटी डिमांडेड ही कम कर दें। तो पहली चीज हमने पढ़नी थी इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। हमने कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स पे इफेक्ट देखा। नेक्स्ट पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन लेंडर्स एंड डिपॉजिटर्स। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन लेंडर्स एंड डिपॉजिटर्स, इसको समझते हैं। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ परचेजिंग पावर। कंज्यूमर्स एंड सप्लायर्स समझ आया? कंज्यूमर सप्लायर समझ आया? फेयरली इजी था, कुछ बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं था। अब लेंडर्स एंड डिपॉजिटर्स पढ़ते हैं। लेंडर्स एंड डेटर्स, सॉरी, लेंडर्स एंड डेटर्स, माय बैड, नॉट लेंडर्स एंड डिपॉजिटर्स, सॉरी।
lenders and debtors, people who lend and people who take money as loan. ठीक है, देखते हैं. Purchasing power is connected to the idea of time value of money. देखते हैं. Let's say today internet prices are 50 rupees per GB. अभी इंटरनेट का प्राइस है 50 रुपीज पर जीबी. यू हैव रुपीज 100. यू कैन बाय 2 GB इंटरनेट, है ना. नाउ द इन्फ्लेशन इन दिस इकोनॉमी, द इन्फ्लेशन इन दिस इकोनॉमी इज 50%. टुमारो इंटरनेट प्राइस बिकम्स at 50% inflation, it will become 75 rupees per GB. At 75 rupees per GB, you can buy merely 1.3 GB of internet. Right? Now, let's say this was the year 2024. This is the year 2025. In 2024, 100 rupees could buy 2 GB of internet. Because of 50% inflation, in 2025, 100 rupees can buy only 1.3 GB of internet. आपने आपके पेरेंट्स को भी बोलते हुए सुना होगा बहुत बार कि हमारे टाइम में तो 1 रुपए में ही बहुत ज्यादा सामान आ जाता था. In our time, in just 1 rupee, we used to get a lot of stuff. Today, we are hardly able to get anything for 1 rupee. Why? Because over time, the purchasing power of my money has dropped. The purchasing power of my money in 2024 was 100 rupees could purchase or had a purchasing power of 2 GB of internet. In 2025, 100 rupees have a purchasing power of only 1.3 GB of internet. Because, and why has this happened? Why has this purchasing power reduced? It has reduced because of the inflation in the economy. Because prices are rising, inflation is reducing the purchasing power of my money. Right? So inflation leads to fall in purchasing power and fall in time value of money. Time value of money is value of money over time. In 2024, rupees 100 could be said to have valued as 2 GB of internet. In 2025, 100 rupees are valued as only 1.3 GB of internet. GB of internet has not changed. It is the same quantity. What has changed here is the purchasing power, the power that you get if you have some money. Your power to purchase earlier was 2 GB. Your power to purchase now is merely 1.3 GB. That has changed. Now, since your purchasing power has changed because of inflation, जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन होगी, यहां पर 50% है, आप इसको अगर 100% इन्फ्लेशन कर दो, if you double this, you say it was 100% inflation, then 2024 it would be 50 rupees 1 per GB. 2025 it would be 100 rupees per GB. जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन उतनी ज्यादा लॉस ऑफ परचेजिंग पावर ओवर टाइम. जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन उतनी ज्यादा लॉस ऑफ परचेजिंग पावर इज गोइंग टू हैपन ओवर टाइम. राइट? ये बात भी क्लियर होनी चाहिए. जितना हाई नंबर यहां पे होगा उतना यहां प्राइस बढ़ जाएगा, उतनी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी. अब लेट अस नाउ पुट दिस इफेक्ट टू लेंडर्स एंड डेटर्स. People who lend money and people who take loans. इस इफेक्ट को यहां पे समझते हैं. किसका नाम ले? ये काफी इंटरेस्टिंग नेम लग रहा है. एर्टजा. एर्टजा लेंड्स टू मी. एर्टजा से मैंने कहा प्लीज गिव मी अ लोन
ऑफ ₹100. मैंने एटजा से लोन लिया ऑफ ₹100. I took this in the year 2024. ठीक है, एटजा से मैंने लोन लिया इन 2024 फॉर ₹100. एटजा gave me this loan at 10% rate of interest. Right? 10% rate of interest was the rate of interest at which she gave me this loan. In 2025, I paid her back. How much do I have to pay her? ₹110. If she had not given me the loan, now let's relate to this economy. If she had not given me the loan in 2024, she could have used this money to purchase 2 GB of internet. Right? She could have used this money to purchase 2 GB of internet. In 2025, what can she now purchase? She has ₹110 now. She has ₹110 now. What can she purchase now? She will be able to purchase about 1.4 GB of internet. Her purchasing, she has more money now. She has more money now. पैसे उनके पास ज्यादा हैं अब, because I have returned with interest. Right? I have returned with interest. But I have returned with interest. But because of inflation, she is actually losing out. Her purchasing power has reduced. Because of inflation, इनको actually नुकसान हो गया. अब इस चीज को क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं. Let me write internet rates here. इस चीज को क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं. The cost of internet cost is ₹50 per GB in 2024. It is ₹75 per GB in 2025. On the basis of this, on 1 GB of internet is the same. 1 GB of internet is the same. In 2024 or 2025, 1 GB of internet means the same thing. So can I say that ₹50 of 2024 purchase 1 GB of internet? ₹75 of 2025 purchase 1 GB of internet? Then I can say that ₹50 in 2024 is the same as having ₹75 in 2025. ये बात समझ आई? With this logic, I can say for someone having ₹50 in 2024 and ₹75 in 2025, it is the same thing. Right? कोई डिफरेंस नहीं है. 2024 में आपके पास ₹50 हैं और 2025 में आपके पास ₹75 हैं. ये दोनों बातें एब्सोल्युटली सेम हैं. These two things are absolutely the same. Now, remember this line, ₹50 of 2024 are the same as ₹75 of 2025. अब एटजा का केस देखते हैं. In this case, she had in 2024 ₹100. In 2025, what would be the ideal figure for her? This same number in 2025 would be ₹150.
because 50 is same as 75. 50 of 2024 is same as 75 of 2025. So 100 of 2024 is equal to 150 of 2025. 150 would be the ideal number, right? Now, if she is giving me money, अब ये बात ध्यान से सुनना, अब ये बात ध्यान से सुन, this is the most important lesson. If she is giving me money, right, her real income, and let's say she is giving me money, अभी ये 10% था, हम इसको 10% की जगह 100% rate of interest मान लेते हैं. Let's say she gave me money at 100% rate of interest. Let's say she gave me money at 100% rate of interest. Then how much money would I have to repay? I would have to repay 200 rupees. है ना? अगर उन्होंने मुझे 100% पे लोन दिया तो मुझे डबल पैसे वापस करने पड़ेंगे. Even though I have returned 200 rupees, what has she actually gained? What has she actually gained in this transaction? What has she actually gained? Return उनके पास है तो 200 रुपए. What has she actually gained? She has only gained 50 rupees in this transaction. Because in this transaction, she had in 2024 100 rupees. In 2025, she has now 200 rupees. But 200 rupees of 2025, 200 rupees of 2025 are not double. 150 rupees of 2025 is equal to 100 rupees of 2024. तो इस 200 में से 150 is equivalent to जो उसने मुझे दिया था. What is actually equivalent is 150. What she has now is this 200 can be written as 150 of 2025 and 50 of 2025. ये तो equal है to what she had last year. What she has gained is only this much. Her real gain is 50 rupees only. Her real gain is this 50 rupees only. This is only the real gain she has had. Right? Because जो चीज 2024 में 100 रुपए की मिलती थी आज 150 रुपए की मिलती है, तो रियल गेन तो सिर्फ 50 रुपए का हुआ है. रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 100% था. सो हर रियल गेन is ₹50 on a loan of ₹100. हर नॉमिनल गेन, नॉमिनल मतलब नाम का, देखने से क्या लग रहा है? देखने से लग रहा है she has gained ₹100 on a loan of ₹100. 100 rupees का लोन दिया, 200 रुपए वापस मिले. And inflation in this economy is how much? Inflation is 50%. So nominal gain seems to be 100%. Real gain is actually only 50%. From here I can write that nominal rate of interest, जो नाम का rate of interest है, minus inflation is equal to real rate of interest. वो actual represent करता है. Nominal real words भी हम पहले सुन सके. From here I will write this. Right? ये बात समझ आई? यार before I complete a topic तुम लोग chat में लिखने क्यों लग जाते हो? How do you have this time to write in the chat? You should listen to what I'm saying ना पहले. I'm not even completed yet. Nominal rate of interest minus inflation is actual rate of interest. अब याद करो in the case where she had given my, आप yes no लिख सकते हो. लोग spam कर रहे थे, मैं उनको कह रहा हूं. You can write yes or no. That's okay.
आप याद करो अर्लियर व्हेन शी हैड गिवन मी लोन एट 10%, तब उसे वापस मिले थे 110 एंड शी हैड एक्चुअली लॉस्ट 40 रुपीज। ये भी तो एक केस था। इसको यहां लगा के देखते हैं। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 10%, इन्फ्लेशन वाज 50%, रियल रेट बना -40%। दिस इज व्हाट शी हैड लॉस्ट जब हम 10% वाला लॉजिक देख रहे थे। सो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन इज रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ व्हेन आई गिव यू लोन, जब मैं आपको लोन देता हूं या आपने मुझे लोन दिया, आप ऐसे तो नहीं कहते कि मैं रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पे लोन दे रहा हूं, इसमें इन्फ्लेशन जोड़ लेना। दिस इज नॉट व्हाट आई से। आई गिव लोन ऑन नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं और आप अगर एक दूसरे को लोन देंगे, हम नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे कि यार आप, मैं आपको लोन दे रहा हूं, आप मुझे 10% पे वापस दे देना 1 साल बाद, है ना। जितना ज्यादा इन्फ्लेशन का फिगर, the more I increase this figure, the lower will be this figure. जितना मैं इन्फ्लेशन का फिगर ऊपर करता जाऊंगा, उतना ये फिगर नीचे होता जाएगा। Now, what is real rate of interest? Real rate of interest is, this is what the borrower is actually paying, and this is what the lender is receiving. This real rate of interest is what the borrower is paying. This real rate of interest is what the lender is receiving. This is exactly what's happening here. Now, more the inflation, greater inflation means a reduction in real rate of interest. So, borrower will pay less, lender will receive less. So, inflation will benefit the borrower and inflation will cost the lender. Lenders are at disadvantage because of inflation, borrowers are at advantage because of inflation. समझ आई बात? अब करके दिखाओ तुम ये क्वेश्चन गलत, है ना। नाउ यू कैन नॉट गेट दिस क्वेश्चन रॉन्ग इन प्रीलिम्स। आई एम अज्यूमिंग, आई एम होपिंग कि अब आप गलत नहीं करोगे। ये चीज आप प्लीज नोट डाउन एंड अच्छे से, ऑल्दो लिखी हुई है प्रिंटेड नोट्स में भी और हैंड रिटन नोट्स में भी, स्टिल आई विल से प्लीज राइट दिस डाउन, क्योंकि ये लाइफ में भी काम आएगी, इवन इन मैनेजिंग योर ओन फाइनेंसेस। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सॉरी, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस inflation is actually the real rate of interest. जो एक्चुअली आप गेन कर रहे हो उसमें इन्फ्लेशन कम करके ही ये वैल्यू आएगी। ये क्वेश्चन, इस चीज पे कम से कम 5 बार क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में, सिर्फ इस लाइन पे, इस लाइन को समझने के लिए। और अब कहीं भी हम ये लॉजिक लगा सकते हैं। अब इस लॉजिक को मैं आपको और बढ़िया तरीके से अप्लाई करके दिखाता हूं। लेट्स एम्प्लॉय दिस लॉजिक। कौन लगाएगा ये लॉजिक? आकांक्षा सिंह। Akanksha gave her money, put her money in savings account in the bank. आकांक्षा ने अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखा इन द बैंक। ठीक है, सेविंग्स अकाउंट में आकांक्षा ने पैसा रखा बैंक में। बैंक ने कहा सेविंग्स अकाउंट में पैसा रख रहे हो, हम आपको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे।
4% ही मिलता है इंडिया में, 4% भी ज्यादा ही है, 4% भी कहीं नहीं मिलता, ठीक है। आकांक्षा ने यहां रखे, शी केप्ट ₹100 in the bank. Next year bank will give her ₹104. Inflation in the Indian economy. Currently inflation in Indian economy is, let's say, 6%. Inflation in the Indian economy is 6%. Akansha in 2024 had ₹100. By this logic, Akansha in 2025 will have ₹104. Let us look at the same 4% rate of interest. Let us now conflate this with inflation. Any good that was available for ₹100 in 2024, because of 6% inflation, will be available for ₹106 in 2025. In this case, what has happened to Akansha's purchasing power? She has lost purchasing power of ₹2. She has lost purchasing power of ₹2, right? What is her actual rate of interest? What is her real rate of interest? What has happened to her? Nominal was 4, inflation was 6, it is -2%. Percent means per 100. So per ₹100 she will lose ₹2. Per ₹100 she will lose ₹2 in the next year. Actually आकांक्षा को लग रहा है कि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग्स अकाउंट में, तो बढ़िया पैसे रख देती हूं, बट per ₹100 she is actually losing ₹2 in savings account because of this logic. अब देखो, what did Akansha do here? Akansha gave money to the bank and bank gave interest to Akansha, interest plus principal. Effectively this is a lending exercise ही only. ये lending ही तो हो रही है, effectively lending exercise ही तो हो रही है, effectively this is lending exercise only. मैंने आपको पैसे दिए और बैंक ने आपको वापस दिए. Similarly, like inflation has a negative effect on lending, inflation also has a negative effect on saving. Right? She has a negative effect on saving also. समझ रहे हो? Depositors are the same as lenders. कोई कह रहा है कि what if she doesn't give to the bank, if she keeps by herself it will be -6%. अरे बैंक में सिर्फ सेविंग अकाउंट थोड़ी होते हैं. She can invest in mutual funds, she can invest in stock market. बात यहां पर ये नहीं है कि नुकसान क्या हो रहा है. Even if she invests in mutual funds, inflation will be a problem. मान लो उसके म्यूचुअल फंड में 18% रिटर्न मिलता है, तो भी रियल रेट तो 12% ही रहा. If inflation was 0, she would benefit. यहां पर क्वेश्चंस तभी हमने क्वेश्चंस देखे थे. यहां पे कंफ्यूज होना आसान है. हमने क्या समझा यहां पे? Inflation benefits the people who take the loan. Inflation benefits the borrowers. Lenders lose out in case of inflation. ये बात समझना जरूरी है. चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाल ले और 20% रिटर्न उसे मिल जाए, विच इज ह्यूज, तो भी तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 - 6 14 ही रहेगा. अगर इन्फ्लेशन 2% होती तो रियल इंटरेस्ट 20 - 2 18 रहता. जितनी इन्फ्लेशन ज्यादा है उतना आकांक्षा जी का नुकसान है. दैट इज द पॉइंट हियर. इसका पॉइंट ये नहीं है कि उसे म्यूचुअल फंड्स में डालना चाहिए या एफडी में डालना चाहिए.
वो आप अपने अपने पर्सनल फाइनेंसेस में यूज करना. आई एम श्योर यू डोंट यूज दिस लॉजिक व्हेन यू पुट योर मनी इन सेविंग्स अकाउंट्स, राइट? आप ये लॉजिक नहीं यूज करते जब सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो. तो moment you are keeping money in saving account, if inflation is higher than the rate of interest you are getting, you are losing money. अगर आपने सेविंग्स अकाउंट में पैसे रख दिए और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इन्फ्लेशन से कम है, तो आप पैसे लूज कर रहे हो, पैसे कम हो रहे हैं सेविंग्स अकाउंट में पड़े पड़े. बैंक का फायदा है, ऑब्वियसली बैंक हैज एन एडवांटेज. बैंक हैज पेड रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ -2% टू हर, राइट? अब एक चीज देखते हैं. अब यहां पर ये प्रॉब्लम क्यों आई, आकांक्षा जी को ये प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि आकांक्षा जी ने बैंक से नेगोशिएट नहीं किया. आकांक्षा जी ने बैंक को ये नहीं बोला कि मुझे रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए 2% का. आकांक्षा जी ने ये नहीं बोला कि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए. आकांक्षा जी ने ये नहीं बोला कि मुझे एक रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए 2% का. लेट्स से आकांक्षा जी हैड गॉन टू द बैंक एंड सेड मुझे चाहिए रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 2%. आई डोंट केयर कि आप क्या, आपके स्कीम में क्या लिखा है, मैं आपके बैंक को तभी पैसे दूंगी जब आप मुझे रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे ऑफ 2%. आकांक्षा जी ने क्यों नहीं किया? क्योंकि आकांक्षा जी ने इन्फ्लेशन के बारे में आज पढ़ा है, राइट? बट बैंक को तो ये बात सालों से पता है. बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं वो तो इकोनॉमिक्स का कोर्स कर चुके हैं, उन्हें बहुत पहले से पता है, उन्हें पता है इन्फ्लेशन क्या होती है. अब बैंक इस इंफॉर्मेशन को यूज करता है. व्हेन बैंक गिव आउट मनी, बैंक भी आगे लोन देता है. When banks give out loan, bank give out loan of real rate of interest. इसी इक्वेशन से अगर मैं रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिराइव करूं तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट. सेम इक्वेशन है, बस प्लस माइनस ऊपर वहां से इधर ले आया मैं. बैंक कैसे लोन देता है? बैंक कहता है आई विल गिव लोन एट रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5%. बैंक लोन किसको देता है? फर्म्स को, फॉर इन्वेस्टमेंट. लेकिन बैंक को क्योंकि ये बात पता है, बैंक सारे लोन ऐसे देता है. बैंक इज अ प्रोफेशनल लेंडर. बैंक इज अ प्रोफेशनल लेंडर. बैंक नोज that if I lend on nominal rate of interest, I will lose out. So bank lends like this. Real rate of interest is 5%. Inflation is 6%. Therefore, my nominal rate of interest will be 11%. So I will give loan at 11%. तो बैंक को पहले फायदा हुआ क्योंकि आकांक्षा जी को इन्फ्लेशन के बारे में नहीं पता था, और अब बैंक कहेगा कि मैं इन्फ्लेशन पे इफेक्ट नहीं बेयर करने वाला, आई विल टेक रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो बैंक लोन दे रहा है 11% पे, राइट? सो व्हाट हैपेंस नाउ? रिमेंबर वी हैव स्टडीड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बाय फर्म्स डिपेंड ऑन टू थिंग्स. इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ फर्म्स डिपेंड ऑन टू थिंग्स. क्या थी वो दो चीजें भाई, बताओ? What were those two things? Interest rate was one. What was the other thing? Expectation of future return, not expectation of future price. Expectation of future return. Okay, I invest ₹100 today in expanding this company. In the future, this company will earn for me more than ₹100. That's why I will invest. Expectation of future return तो मेरे दिमाग में है. It is a mental model. It cannot be quantified. This is the only thing we can quantify. Interest rate is the price of money. This also we know.
Interest rate is the price of money. What is the bank saying? My nominal rate of interest at which I will offer you money is 5% plus inflation rate. Higher the inflation rate, higher will become the interest rate that I have to pay. मेरे को तो इस पे लोन मिल रहा है ना, बैंक ने ऐसे कैलकुलेट किया है इसको. Bank has calculated like this. I am getting loan at this value. बैंक इसी टाइप का लोन देता है. बैंक से अगर किसी में आप में से किसी ने लोन लिया है, loans are always given at 12%, 13%, etc. etc. उसमें 13% में रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ही है, बाकी इन्फ्लेशन है. The higher the inflation, the more the inflation, the more is this value. The more is this value, the lesser the investment decisions will be taken. जितनी इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, बैंक ने मान लो अपना रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर रखा है 5% पे, इन्फ्लेशन becomes 10%, बैंक will send loans at 15%. Bank will make loans at 15%. You will say that okay, अब मैं क्यों लूं लोन? Loans will become investment. Loan will become expensive. And this relationship we have already seen. Interest rate is price of money. Money becomes more expensive. I will not invest. So now getting back to where we had started. Look at this now. Inflation has a positive impact on the borrowers. It has a negative impact on the lenders. Inflation has a negative impact on savings. Inflation has a negative impact on investment. ये हमने देखा अभी. This is exactly what we saw. This has been asked at least 4 to 5 times in the UPSC prelims exam. This same thing has been asked 4 to 5 times. Right? यही हमने लॉजिक देखा है अभी. I was the borrower here. I was the borrower. Lender was Irtaza. Saver was Akanksha. And investment we have seen the logic. ये प्लीज इंटरनलाइज कर लो जो हमने अभी सुना. समझ आई बात? याद है इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे हमने. वी हैड सीन मेनी क्वेश्चंस लाइक दिस. याद आ रहा है पीवाईक्यूज में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन थे. Negative impact on investment means when inflation is high, there will be lesser investment. ये तो हमने देखा ही है अभी. We've just proven this. Why I am asking you to now look at this together? Because if you now go and look at these two together and these two together and these two and these two together, आप पक्का confuse हो गए. इसीलिए I have given you different logic for different thing. Right? डिफरेंट. हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले हमने क्या देखा? दिस केस मी एंड इर्तजा. दिस केस वी सॉ. इस केस में द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट आई वाज पेइंग बैक वाज -40%. तो मैं एक रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम पे कर रहा हूं. जो उन्होंने तो 10% बोला है, बट मैं पे तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. दिस इज व्हाट आई वाज पेइंग. यही हमने देखा. बोरोवर वाज पेइंग लेस, लेंडर इज रिसीविंग मोर. बोरोवर इज पेइंग लेस, लेंडर इज रिसीविंग मोर. दिस वी सॉ दिस लॉजिक. नेक्स्ट, देन वी सॉ Akanksha and bank's case. Akanksha was the saver and she was receiving less money. She was receiving less money because of inflation. She was, on paper she was receiving 4%, but actually she was losing money. So savers were losing out. Lastly, we saw banks lending.
Banks lending is done in a different manner. When banks are lending, they account for this problem. Banks know of this problem, so they account for this problem. So banks, when they lend, they fix their real rate of interest. They say, I want real rate of interest of 5%. Nominal कुछ भी हो जाए. Nominal होगा जब उसमें आप inflation add करोगे. This leads to investors actually getting higher nominal rate of interest. This discourages investors. So inflation leads to negative impact on investment. Now is it clear? Bank knows about this problem. People don't. तभी मैंने शुरू में आपको बैंक का एग्जांपल नहीं दिया. We don't know about this problem. So inflation has a positive impact on the borrower. Who was the borrower? I was the borrower. Inflation has negative impact on lender. Who was lender? It is a. Inflation has negative effect on saver. Who was the saver? Akanksha. Inflation has negative effect on investments. Investments in the economy will reduce. ये हमने देखा because banks are smart. ये आपको मैं चाहता हूं कि अब आपको लॉजिक क्लियर रहे. अगर आप आपस में लिंक करोगे तो डिफिकल्टी होगी बिकॉज बैंक्स लेंडिंग इज डिफरेंट देन आर लेंडिंग. हमारी जो लेंडिंग है और बैंक की जो लेंडिंग है वो डिफरेंट है. दिस नीड्स टू बी क्लियर टू यू. अब लास्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी एंड दिस इज अगेन ये थोड़ी ज्यादा जो अभी तक पढ़ा है उससे भी ज्यादा कंसेप्चुअल है बट मोस्ट लोगों को ये आता भी नहीं है और लेकिन ये फायदेमंद बहुत है. इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं. राइट. लेट्स टॉक ऑफ inflation and its effect on taxpayer and tax collector. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो प्लीज ध्यान से सुनना. ठीक है. नाउ इन्फ्लेशन इफेक्ट ऑन, क्या हो गया यार? स्मार्टनेस ऑफ बैंक इज लीगल. व्हाट सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन इज दैट यार? देखो मैंने आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसीलिए दिखाए थे ताकि आपको पता हो कि क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं. अदरवाइज देयर इज नो लिमिट टू दीज डिस्कशंस. राइट. मैंने इसीलिए आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाए थे ताकि आपको ये बात पता हो what sort of questions they are asking. Look at this question. Inflation benefits the debtors. Inflation benefits the bond holders. You don't know what is bond. You will understand this when you read Money with me in the next 2-3 days. But inflation benefits the debtors. Debtors are people who have taken loan. Bond holders are people who have given loan. Bond holders are people who are given loan. Debtors are people who have taken loan. Okay. Now this is generally a confusing question if we have not studied the logic. है ना? Now we know. Now ये पढ़ते हैं अब. Inflation and impact on taxpayer and tax collector. Right? But we will take 2 minutes break before we start. This is the last topic we'll read today. This is fairly important and fairly difficult to understand. 2 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद ये वाला टॉपिक देखते हैं. अरे नहीं श्रेयांश, ये नहीं, यही तो नहीं करना यार. टेक लोन फ्रॉम बैंक एंड टेकन लोन फ्रॉम रैंडम पर्सन.
Inflation benefits the borrower, inflation negatively impacts the lender. That is the conclusion we reach to. पीछे की राम कथा वो नहीं पूछ रहे ना. Okay. Now, ठीक है, अब देखते हैं inflation's effect on taxpayers and tax collectors. To understand this, first we have to understand how tax is to be collected. Right? How tax is to be collected, that we have to understand first. Then we will understand inflation's effect on this matter. थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से देखते हैं. Government comes out with tax policy. Tax policy generally says there are some income taxes. Income taxes की बात हो रही है. Income taxes are usually in brackets. There are brackets of income tax. ये शायद आपने सुना भी होगा that if your income is, let's say, from 0 to 5 lakh, there is no tax, 0% tax. If your income is from 5 lakhs to 10 lakhs, there is 10% tax. If your income is from 10 lakhs to 20 lakhs, there is 20% tax. If your income is above 20 lakhs, there is 30% tax. ठीक है? Let's say this is the tax bracket that India is following. Firstly, what type of tax bracket is there? This is called progressive tax bracket. ये हम fiscal policy देखेंगे by the end of this week, उसमें भी ये देखेंगे. But if you are read now, तो better है. Progressive tax bracket means the more money you earn, you earn between this limit, you will pay this tax. You earn between this tax. As the quantum of money increases, tax level will also keep increasing. Quantum of money increases, tax level will keep increasing. Now most people don't know this कि tax लगता कैसे है. लोगों को लगता है, and I'll ask you this. In this case, if I am making rupees 20 lakh, how much tax do I have to pay? If my income, let's say in this case, is 20 lakhs, what is my tax? चलो 20 की जगह 21 कर लेते हैं to make it simple. 21 lakhs, what is my tax liability in this case? 21 मान लो, 21. In case of 21, what is my tax liability? How much tax will I have to pay? Number बताओ, don't tell me figure, tell me number. अरे exemption छोड़ो, मान लो this is 21 lakhs is my taxable income.
If you are saying it is 30% of 21 lakhs, then you are wrong. If you are saying it is 30% of 21 lakhs, then this is wrong. This is not what my tax liability will be. If my income is 21 lakhs, how is tax applied? पहले ये देखते हैं. There is from this level to this level, 0 to 5 lakh, there is no tax. So on my first 5 lakhs of income, I will pay 0% tax. My income is 21 lakh. On my first 5 lakh income, my tax liability is 0. On next 5 lakh income, my tax liability is 10%, meaning my tax liability is 50,000. On next 10 lakh, 10 to 20, the next bucket, my tax liability is 20%. So next 10 lakh, my tax liability is 20%, which is going to be, let's say this will be 1 lakh rupees. Should not be 1 lakh though, should be 2 lakh, right? 2 lakh rupees, right? And then in the last 1 lakh, which is above this 20, बाकी 1 यहाँ पे है, this 1 lakh which is above the 20, here my tax liability is 30%, which is 30,000 rupees. So my actual tax liability here is 2.8 lakh rupees. ठीक है? Because first 5 lakh I pay 0%, next 5 lakh I pay 10%, which is 50,000. Next 10 lakh I pay 20%, which is 2 lakh. And last 1% I pay 30%, which is 30,000. This is how tax system is applied. समझ आया? So at 21 lakh rupees, this is my tax structure. Okay, this is how income tax is applied to anyone. Now, ideally, income tax is not applied like this also. From my income, 21 lakhs is, let's say, my income. We will first deduct exemptions or deductions. What are exemptions or deductions? For example, money that I spend on life insurance for my family, right? Life insurance for my family, that is called deduction. Let's say government is saying whatever money you spend on life insurance, that money we will not put tax on. Whatever money you spend on health expenditure, we will not put tax on. Whatever money you spend on your education, we will not put tax on. So my income is 21 lakhs. Let's say I spend 5 lakh rupees on education, health insurance, life insurance. Then I will subtract 5 lakh rupees from this, and this figure will become 16 lakh. Now 16 lakh will get arranged like this. 16 lakh will be called my taxable income. From taxable income, then this bucket sort of division will happen, and then my tax will be calculated. This is how tax is actually applied in a progressive tax system, and this is what India has. There is also a tax system known as proportional tax system. Proportional tax system is everyone will pay 20% of their income as tax. आप ज्यादा कमाओ कम कमाओ doesn't matter. 20% of your income is paid as tax. आप लाख रुपए कमाओ तो 20,000 टैक्स, आप करोड़ रुपए कमाओ तो 20 लाख टैक्स. That is the second system of taxation called proportional, although this is not what India follows. India का tax system progressive ही है. Why is it called progressive? Because people who are more rich have greater burden of paying tax. So it is a progressive system. You are more rich and you have greater burden of paying tax. किसी की इनकम अगर लेट से 50 लाख रुपीस है तो उसकी इस बकेट में सबसे ज्यादा पैसे हैं तो वो उस पर बहुत ज्यादा टैक्स देगा.
right? This is progressive. It is progressively getting higher. As your income increases, your tax bracket is getting higher. Proportional is same, proportional for all. The proportion of your income that is taken away as tax is the same. Proportion of your income that is taken away as tax is the same. Third system of taxation is called regressive system. What is regressive system of taxation? Regressive system of taxation is, it is constantly regressing. Let's say if your income is 0 to 5 lakh, you will pay 10% tax. If your income is 5 lakh to 10 lakh, you will pay 5% tax. 10 lakh to 20 lakh, tax bracket is 2%. Above 20 lakh, it is 1%. This is a regressive system of taxation because over income brackets, the amount of tax is reducing. Over income brackets, the amount of tax is reducing. Now, in this case, let's say someone has an income of 21 lakhs versus someone has an income of 19 lakhs. First person, person A, 21 lakhs is the taxable income. Person B, 19 lakhs is the taxable income. Who pays more tax, A or B? Who pays more tax, A or B? In this system, A will pay more tax or B will pay more tax? और गलत बोला ना अगर किसी ने, फिर देखना, अभी तक सबका गलत है। नरेंद्र का गलत, तन्मय का गलत, पौशिका गलत, आदर्श गलत, एमिर गलत, जॉयता गलत। जल्दी कमेंट करो बस। इनकम बता तो दी। आधे लोगों का गलत है। अरे इसमें क्या है? हाउ के मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? सेम लॉजिक यू अप्लाई। हाउ, व्हाई आर यू गेटिंग दिस रॉन्ग? आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड। ए की इनकम है 21 lakhs, बी की इनकम है 19 lakhs. वी विल अज्यूम दैट दिस एंटायर इनकम इज टैक्सेबल. अब देखते हैं ए का केस देखते हैं. पहली 5 lakhs of income of A, he will pay 10% of this, which is 50,000. Next 5 lakhs, he will pay 10%. He will pay again 5%, which is 25,000. Next 10 lakhs, he will pay 2%, which is 20,000. And last 1 lakh, he will pay 1%, which is 1,000. B का केस देखते हैं. First 5 lakh, in case of B, 5 lakh will pay 10%, 50,000. Next 5 lakh, they will pay 5%, which is 25,000. Next, they have only 9 lakh left. From 9 lakh, they will pay 2%, which is 18,000. किसने टैक्स ज्यादा भरा? किसने टैक्स ज्यादा भरा? System was regressive. System is regressive. धीरे धीरे कम हो रहा है. That does not mean they have a different tax liability. इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम अर्न करने वाले से ज्यादा टैक्स मांग लेंगे. अब despite the fact that more taxes paid by this person, more taxes paid by this system is still set to promote inequality. Why?
डिस्पाइट द फैक्ट दैट दिस पर्सन विद मोर इनकम हैज पेड मोर टैक्स, जिसने ज्यादा इनकम थी उसने ज्यादा टैक्स भरा है, जिसने कम इनकम थी उसने कम टैक्स भरा है. डिस्पाइट दिस सिस्टम इज सेट टू प्रमोट इनइक्वालिटी. व्हाई? व्हाई? सोच के बताना. दिस इज 93,000. This is 95,000. No, 96,000. इन्होंने 93,000 भरा, इन्होंने 96,000 भरा. This is set to promote inequality because this person pays 93,000 out of 19 lakhs. This person pays 96,000 out of 21 lakhs. The percentage of income of this person going as tax is higher. Percentage of income of this person going as tax is lower. यहां पर जो इनकी परसेंटेज ऑफ इनकम दैट इज गोइंग एज टैक्स वो कम है, यहां पर परसेंटेज ऑफ इनकम गोइंग एज टैक्स वो ज्यादा है. दिस पर्सन इज अर्निंग लेस बट पेइंग मोर परसेंटेज ऑफ हिज इनकम एज टैक्स. दिस पर्सन इज अर्निंग मोर, earns more but pays less percentage of income as tax. Less percentage of income as tax, more percentage of income as tax. This is why this is called a regressive system. This is why this system is against the concept of equality. इसकी percentage of taxes बहुत ज्यादा हो रही है even though he is earning less. Ideally आपकी percentage of taxes तब ज्यादा होना चाहिए when you earn more, right? Chitranshi, no country in the world has this tax system. Almost no country in the world has this tax system. Almost every country in the world has this tax system. People might be able to cheat this tax system. उसी के लिए तो IRS होता है. USA has this type of tax system यार. USA has this tax system. Sweden has exactly this tax system. Their just brackets are much higher. Most countries in the world have this progressive tax system. Most countries, यार आप सोचो, आपको पॉलिटिक्स में रहना हो अगर, हेलो, बेटर नाउ? बेटर नाउ? अब तो सुनाई दे रहा होगा. हाँ, मैं कह रहा था that if you are a politician and you keep this sort of tax system, your government is not going to last more than one term, maybe not even one term. ठीक है? तो most countries in the world have this sort of tax system. This is how tax system is there in most countries of the world. Even proportional tax system is not considered correct. Although in my opinion proportional sounds like the most fair, but proportional is also not considered correct. अब हम देख क्या रहे थे? हम देख रहे थे इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन टैक्स पेयर एंड टैक्स कलेक्टर. ये हम देख रहे थे. लेट अस सी दिस कि यहां क्या हो रहा है.
We will assume this sort of tax structure because this is the one that's most common. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ for ease of understanding. 0 to 5 lakh 0%, 5 to 10 lakh 5%, 10 lakh to 20 lakh 10%, above 20 lakh let's say 20%. Let's say this is the tax structure. इसी टाइप का है tax structure इंडिया का भी, थोड़ा सा figures are not right here. Now let's say person A is working in a company and their annual income is rupees 9 lakh. Yeah, let's say annual income of this person is, let's say 9.5 lakh. Although this is not required, हम 9 lakh से भी calculate कर सकते हैं. Annual income is 9 lakh. ठीक है? अब the inflation in the economy is 10%. So person A goes to their employer, goes to their boss, and person A says, sir, inflation in the economy is 10%. This year my salary is 9 lakh rupees, inflation is 10%. That means prices will be 10% higher next year. Since prices will be 10% higher next year, please increase my salary by 10%. अगर आप 10% से salary नहीं बढ़ाओगे, I will keep losing my money. He says, sir, RBI is saying inflation is 10%. My salary is 9 lakh rupees a year. Please make my salary, or please increase my salary by 10%. Only if you increase my salary by 10%, I will get the requisite, money to match my purchasing power. Otherwise, my purchasing power is declining. Otherwise, effectively, you are giving me a pay decrease. They will say, okay. Now, let's see what happens to the income of this person after he gets this pay rise. Earlier pay was 9 lakh. Now pay is 9.9 lakh. To make the calculation easier, let's say earlier pay was 10 lakh. Now pay is 11 lakh. Okay, just to make the calculation easier. Okay, let's make this 10 lakh just to make the calculation easier. Okay, when his pay was 10 lakh, what was happening? His first 5 lakhs, zero tax was there. Next 5 lakh, he was paying 25,000 as tax. His pay became 11 lakh. First 5 lakh, zero tax is there. Next 5 lakh, 25,000 tax is there. The remaining 1 lakh, 10,000 tax is there. What is the total tax burden here? 25,000. What is the total tax burden here? 35,000. Okay. Now let's see what happens. What is his actual income? In this case, earlier he had 10 lakh rupees of income minus 25,000. 25,000 तो टैक्स था, 25,000 तो टैक्स ही था पहले से. Actual income was 9.75 lakh. So this 9.75 lakh was his purchasing power in this case. अब income 11 lakh हो गई, but tax burden is 35,000. Now it is 11 lakh minus 35,000. Now in case of 11 lakh minus 35,000, what is the purchasing power now? 10.65 lakh. So his purchasing power, his effective purchasing power has increased from 9.75 lakh to 10.65 lakh. This much is clear?
This much is clear? अरे मान लो कोई एग्जाम्पशन नहीं है यार, just assume there is no exemption. So increase in purchasing power is from 9.75 it has become 10.65. So total increase in purchasing power is 0.9 or 90,000 rupees. This is the increase in purchasing power he has had because of being given a higher salary. Higher salary थी तो he has gotten 9.75 lakhs from disposable income. From 9.75 lakh he has gone to 10.65. 90,000 rupees की purchasing power बढ़ी है, right? ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? Now what was inflation? 10%. There was 10% inflation. What you could purchase in 9.75 lakh in year 1, next year you will only be in year 2, what will that same thing cost? In 10, if there is 10% inflation, what will the same thing cost next year? Good. 10.72. 10.725 होगा एक्चुअली. अगर आई जस्ट एडेड बाय 10% हियर, मैं सिर्फ 10% की एडिशन करी है, कैलकुलेटर से भी कर सकते हो. अरे 10.725 होगा, कैलकुलेटर से कर लो, ठीक है. 10.725 विल बी द वन, ठीक है. बेसिकली टू ऐड दिस आई हैव टू ऐड 97,500 रुपीज. 10% इसका ऐड करना है ना यार, 10% ऐड करना है तभी तो परचेसिंग पावर बढ़ेगी. आई हैव टू ऐड 97,500 रुपीज, राइट? This is what I have to do. For equivalent purchasing power, 97,000. यार क्यों चैट लिख रहे हो यार? प्लीज स्टॉप, दिस इज इंपॉर्टेंट. मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, डजंट मीन कि आप लिखते जाओगे. स्टॉप, लिसन. फॉर इक्विवेलेंट इंक्रीज इन परचेसिंग पावर 97,500 rupees was needed. Equivalent increase in purchasing power after tax would be 10.725. पहले आफ्टर टैक्स आप यहां पे थे, अब आप आफ्टर टैक्स यहां होने चाहिए. आफ्टर टैक्स इफ यू रीच दिस प्लेस, only then your purchasing power is the same. तो 97,500 रुपीज बढ़ने चाहिए थे पोस्ट टैक्स. बढ़ कितने रहे हैं पोस्ट टैक्स? 90,000 ही बढ़ रहे हैं. बिकॉज ऑफ टैक्सेशन, द स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन. आपने इन्फ्लेशन होती थी 10%. 10% इन्फ्लेशन पे आपने वेज नेगोशिएट करा ली कि मेरे को 10% वेज बढ़ा दो, बट बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन यू आर एक्चुअली लूजिंग आउट ऑन मनी. अब मान लो टैक्सेशन जैसा कुछ भी नहीं होता. लेट्स से देयर वाज नथिंग लाइक टैक्सेशन, ऐसा कुछ होता ही नहीं. लेट्स से देन व्हाट वाज हैपनिंग? लेट्स से देयर वाज नो टैक्सेशन इन द इंडियन इकोनॉमी. तो देखते हैं क्या होता. आज किसी की सैलरी है 10 लाख रुपए, योर सैलरी इज 10 लाख रुपीज, इन्फ्लेशन इज 10%. यू विल से गिव मी 11 लाख रुपीज सैलरी नेक्स्ट ईयर. आप 11 लाख की सैलरी लेते, टैक्सेशन का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है. देयर इज जीरो टैक्स. इंडिया में टैक्स है ही नहीं. पहले आपकी परचेसिंग पावर 10 लाख थी,
अब आपकी परचेजिंग पावर 11 लाख है, प्राइसेस बढ़े 10%, आपने वेजेस बढ़वा ली 10%। इन्फ्लेशन क्या है? दिस इन्फ्लेशन इज द फैक्ट दैट प्राइसेस आर राइजिंग, आपने वेजेस भी बढ़वा ली इक्वली। When wages increased, what will increase? Consumption will increase. Wages are increasing, consumption will increase. You will consume more once you have more wages. Consumption is a part of aggregate demand. Aggregate demand will increase. Aggregate demand मतलब basically लोगों की spending बढ़ेगी. If there is an increase in aggregate demand by increase in consumption, inflation will rise further. In case you don't remember this, shift of aggregate demand outside, inflation will rise. Right? So aggregate demand increases, inflation will rise again. Inflation now becomes 15%. You will say increase my wages by 15%. Right? This will constant cycle will keep happening. Inflation 10%, मेरी wages 10% बढ़ाओ और spend करते हैं. Constant this cycle will happen. Prices increase, wages increase, prices increase, wages increase, pricing increase, wages increase. Right? ये cycle called price wage cycle. This will spiral out of control. Prices will increase, wages increase means consumption will increase, more prices will increase. ये चलता रहेगा. But because of taxation, you are not getting the same purchasing power. You are not getting the same purchasing power because of taxation. आपको सेम परचेसिंग पावर नहीं मिली, आपको सिर्फ 90,000 और की परचेसिंग पावर मिली, आपको मिलनी चाहिए थी 97,500 की. Because of taxation, because of the progressive nature of taxation, even an increase in wages will mean that your actual purchasing power is not increasing by the same amount as it should have. समझ आई बात? Your actual purchasing power has not increased by the same amount as it should have. Ideal increase was this much. हो रहा है this much. So your purchasing power is dragged down due to taxation. है ना? इससे हो क्या रहा है? Now prices will increase, wages will increase, but consumption will not increase that much. Prices will increase, wages will increase, but consumption will not increase that much. Why? Because purchasing power, consumption power has not increased. There is no proportional increase. Sorry about the baby sound. मेरी mother का clinic है इसी building में, and she is a pediatrician. That's why. Sorry about that. If you want, I can stop, but I think सुनाई तो दे ही रहा होगा आपको. I am also getting distracted यार, but मैं पढ़ा रहा हूँ ना फिर भी. ये मेंस में भी आ सकती है डिस्ट्रैक्शन, और आती है. It's not that difficult to keep focus. मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी आवाज आ रही है. ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको आ रहा हो और मुझे ना आ रही हो? है ना? Prices increase will lead to increase in wages, but it will not lead to increase in consumption that much, because purchasing power has not increased proportionally. Right? Purchasing power has not increased proportionally. 97,500 से बढ़नी चाहिए थी, सिर्फ 90,000 से बढ़ी है. Right? Because purchasing power will not increase that much,
now consumption will not increase that much. Consumption उतने level पे नहीं बढ़ेगी. It was consumption that was causing the price wage spiral. ये consumption increase ही ये price wage spiral cause कर रहा था. It was consumption that was causing this price wage spiral. Prices increase, wages increase, consumption increase, again prices increase. But now consumption will not increase that much because of this progressive nature of taxation. Price wage spiral will be stopped, right? So I can say price wage spiral से क्या हो रहा था? Economy was going into spiral, it was destabilized. Price wage spiral was leading to an unstable economy. But because of taxation and progressive taxation, there is an automatic stabilizer here now. अब एक automatic stabilizer है economy का. ये spiral के prices, wages, inflation, consumption, prices, wages, inflation, consumption ये हो रहा था. इसको रोकने के लिए taxation is now an automatic stabilizer. It has stopped this by dragging down your purchasing power. This dragging down of purchasing power due to taxation is called fiscal drag. This fiscal drag is an automatic stabilizer in the economy. अब टू द टैक्सपेयर को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? बिकॉज ऑफ दिस डिड द टैक्सपेयर हैव एन एडवांटेज और अ लॉस? फायदा हुआ या नुकसान हुआ टैक्सपेयर को? दे हैड अ लॉस. देयर परचेजिंग पावर, इफ आई लुक एट द टैक्सपेयर, परचेजिंग पावर should have increased by 97,500 rupees, but actual increase was only by 90,000 rupees. So taxpayer faces a loss. Let's look at the government. Government was earlier getting tax of 25,000. Government was earlier getting tax of 25,000. In this case, first case, when the salary was 10 lakh rupees, government was getting 25,000. Now, ideally, with inflation, next year, government should have collected 25,000 plus 10% of 25,000. That means, inflation को account करके, next year, government should have collected 27,500 rupees. To keep it consistent with inflation, for government's treasury to stay the same, गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन अकाउंट करके 25,000 से नेक्स्ट ईयर 27,500 कलेक्ट करना चाहिए था. गवर्नमेंट इज एक्चुअली कलेक्टिंग हाउ मच? फ्रॉम 25,000 इट इज कलेक्टिंग 35,000. तो गवर्नमेंट को तो है बहुत मेजर एडवांटेज. दे हैव बीट इन्फ्लेशन. 10,000 रुपीज ज्यादा कलेक्ट किए. गवर्नमेंट टू मैच इट्स परचेजिंग पावर, गवर्नमेंट की परचेजिंग पावर की बात हो रही है. Government should have collected 2,500 more. Government actually is collecting 10,000 more. This person should have collected 97,500 more. He is only getting 90,000 more. ये जो 7,500 की परचेजिंग पावर का लॉस है, ये कहां गया? ये 75,000 की परचेज 7,500 का जो परचेजिंग पावर का लॉस है, वही यहां गेन है 7,500 का. दैट इज द गेन द गवर्नमेंट हैज डन. जो गेन इस आदमी का होना चाहिए था, जो इस बंदे का लॉस हो गया इन परचेजिंग पावर, दैट इज व्हाट गवर्नमेंट हैज गेन्ड. सो गवर्नमेंट्स ट्रेजरी इज ड्रैग्ड अप, योर परचेजिंग पावर इज ड्रैग्ड डाउन. Because your purchasing power is dragged down, your consumption expenditure is reduced. Because your consumption expenditure is reduced, the price wage spiral is stopped.
This is the phenomena of fiscal drag due to progressive taxation leading to stopping of price wage cycle, also known as automatic stabilizer of the Indian economy. समझ आया कुछ? ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब देखो, अब बात सुनो मेरी. Effects of inflation on consumer, on producer, on borrower lender, on saving investment, fiscal drag, types of taxes, how it leads to fiscal drag, etc. हमने कर लिया. हमने जो नहीं किया वो है ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, और ये आप खुद पढ़ोगे. इसमें कुछ भी नहीं है समझने का. टाइम ज्यादा हो गया, नहीं तो मैं पढ़ा देता. इसमें कुछ भी नहीं है. इट इज लिटरली creeping inflation is around 4%, walking inflation is 3% to 10%, running inflation is 10% to 20%, galloping inflation is rapid increase, hyperinflation is very high increase, structural inflation नाम से क्लियर है because of structure of economy, shrinkflation और skewflation पढ़ना very simple to understand, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है. एक बार दोबारा देख लेंगे in case you have a doubt. आपको सिर्फ stagflation में डाउट आएगा, ठीक है, सिर्फ स्टैगफ्लेशन में डाउट आएगा. स्टैगफ्लेशन आप पढ़ लेना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में स्टैगफ्लेशन से स्टार्ट करेंगे. बाकी आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी सॉर्ट ऑफ डाउट हियर. जस्ट रीड दिस वंस, ठीक है. अब माय फेवरेट टाइम ऑफ द क्लास, माय फेवरेट टाइम ऑफ द क्लास इज 1 मिनट समरी. आज हमने स्टार्ट किया विद सीपीआई. हमने देखा कि 3 तरह का सीपीआई लेबर ब्यूरो कैलकुलेट करता है. इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर, रूरल लेबरर. इनका हमने देखा बेस ईयर और कैलकुलेट करता है लेबर ब्यूरो. फिर हम आए सीपीआई और 3 तरह का, रूरल, अर्बन और कंबाइंड. इसका हमने रिलेटिव वेटेज देखा, गुड्स में क्या क्या है. इस सब का हमने बेस ईयर देखा और हमने देखा कि इनको कैलकुलेट करता है सीएसओ. फिर हमने देखा कि ये काफी वॉलेटाइल हो सकता है, तो इसको हमें स्टेबल करने की जरूरत है. इसको जब हमें स्टेबल करने की जरूरत है तो देयर इज कोर इन्फ्लेशन. एंड कोर इन्फ्लेशन में भी हमने देखा कि कुछ पेट्रोल वगैरह आ रहा था, तो वी केम अप विद समथिंग कॉल्ड रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन. व्हेन वी केम अप विद समथिंग कॉल्ड रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन, देन वी थॉट कि इसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी बिकॉज इट इज नॉट टेकिंग अप द एक्चुअल क्वांटिटीज. सो वी केम अप विद कंज्यूमर फूड इन्फ्लेशन. देन वी सॉ दैट food price inflation. Then we saw that this is only measuring from the consumer side. Let me calculate from the wholesale side. From the wholesale side, there is wholesale price index. This does not look at taxes, right? But it does not have any services. And there was a divergence between WPI and CPI. Because of this divergence and some other factors, there was a proposal under the Naresh Chandra task force to incorporate the producer price index. What will this do? This will see true cost. It will also not look at taxes. It will also count both services and goods. So it will be a better measure. And PPI is also something that most countries of the world use. It is a solution to the divergence problem, and it is compatible with the system of national accounts given by UN. ये हमने पढ़ा. After this, we completed our measurement of inflation. From measurement of inflation, we came to effects of inflation. Inflation के अगर मैं effects देखूं, तो पहले जो effects of inflation हैं, they are calculated on the lenders and the borrowers. Borrowers पे there is positive effect, lenders पे there was negative effect. जो सेविंग्स कर रहे थे उन पे भी देयर वाज नेगेटिव इफेक्ट. जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट्स रिड्यूस ड्यू टू इन्फ्लेशन, ये भी हमने देखा. देन इन्फ्लेशन इफेक्ट वी हैड टू कैलकुलेट ऑन टैक्स पेयर एंड
tax collector. Taxpayer has a negative effect, tax collector has a positive effect. This leads to the phenomena of fiscal drag, which is an automatic stabilizer. Inflation effects may we also looked at something of how it affects consumers and producers. When we were looking at inflation's effect on consumers and producers, we saw that consumers actually are negatively impacted, producers are positively impacted in the short run. But in the long run, for an economy, what is actually required is low and stable rate of inflation so that output keeps increasing, producers keep benefiting, but इतना ज्यादा ना हो कि consumers will reduce their quantity demanded. यही पढ़ा हमने आज. अब प्लीज नोट्स मैं अभी अपलोड करा रहा हूं, लो आधे घंटे का ब्रेक और इसको रिवाइज कर लो. ठीक है, बाकी कल मिलते हैं. ठीक है, आई होप दिस एक्सरसाइज हेल्प्स. ये एक्सरसाइज हम रोज करा करेंगे. ठीक है, चलो चलो, सी यू टुमारो.